I would like to introduce our speaker for today's session, Mr. Siddharth Sharma, founder and director, Surpass Provis India Private Limited, founder, ISID Structural Design Service. He's a civil engineering graduate from Sir Padmapat Singhania University, Udaipur. He has done Masters in Structural Engineering from SPSU and Masters in Interior Design from INIFD Udaipur. He has niche skills in structural design using software such as STAAD Pro, STAAD Foundation Advanced, RCDC, RAM Structural System, RAM connections. He has executed structural design projects using response spectrum, capacity-based design, stability analysis, pushover analysis. He has worked with construction companies like L&T, Tata Nestin, BHEL, Louis Berger, and provided structural design consultancy with Eptisa for smart city projects at Udaipur, Rajasthan, and Patna, Bihar. He has handled industrial projects with AVS for prestigious companies like Hindustan Zinc Limited, PI Industries, Shree Cement Limited, BPCL, Volcam Industry Limited, JK Paper, Jubilant Industry, etc. He is heading a team of architects and engineers and designers at AVS for overall project delivery, which includes preparation of structural analysis model, finalizing structural design, and preparation of construction drawings along with BOQ. His role is extended to meet and understand requirement of client for seamless delivery of projects. Siddharth is also engaged in training civil engineers and draftsmen for preparation of industrial and commercial standard drawings using the latest drafting software. For today's thrilling panel discussion, we have our Surpass experts, Mr. Arun Kumar Sharma, founder of AVS Engineers, who is a senior structural consultant. Mr. Arun Kumar Sharma graduated from IIT Delhi in 1971 and brings a wealth of experience and expertise of our webinar today. We have architect Shantanu Sharma, a senior architect and consultant with us. Shantanu Sharma graduated from Ayojan School of Architecture and holds a master's degree in urban planning from MNIT Jaipur. His extensive knowledge and insights are invaluable to our discussion. And Ms. Divya Sharma, an architect and consultant who graduated from APIED, Vallabh Vidyanagar, Gujarat. She also holds a master's degree in landscape design from CEPT Ahmedabad. Ms. Divya Sharma's expertise in architecture and landscape design adds another dimension to our webinar. I would also like to introduce our special guest for the panel discussion, Mr. Rahul Mathur, a senior structural design consultant and concrete design at Guruveshwar Consultant Private Limited, Ms. Ketki Mundra, BTech from Pune University and MS and MBA from United States of America. Ketki ma'am has recently been awarded with UWCCI Women Brilliance Award, and Mr. Praful Kothari, Assistant Professor, Department of Civil Engineering at Institute of Engineering and Technology, MLSU Udaipur. Throughout the webinar, they will share their valuable insights, practical experience, and profound knowledge gained from their years of dedication and expertise in the field. I encourage all of you to actively engage with our experts, ask questions, and take part in the discussions. Before we proceed, I would also like to express my deepest gratitude to our sponsors, AVS Engineers, a one-stop solution for all construction service, and INIFD Udaipur, a global chain of fashion and interior design institute. Without their generous support, the webinar would not be possible. Without further ado, let's welcome our speaker, Mr. Siddharth Sharma, as we begin our exploration of structural engineering. Thank you, and let's enjoy the webinar. Good afternoon, everyone. So I welcome you all on behalf of Surpass Provis India Private Limited to this wonderful structural engineering webinar. So before starting my presentation, I would like to just tell you a little bit more about what structural design is. So structural design is a very vast field. You cannot comprehend it into a small or just one segment. It is a very diversified field which is spread into all aspects of industries and all aspects of life. So
when we think of structural engineering, it starts from a molecular level. If you see our body, it has a structure. If you see a cell, it has a structure inside it. So whatever we do in life, whatever you see which is existing, like even universe, it has a structure. So a structural engineer is a person who understands how equilibrium works and how forces works and how he can make things stand. That is what, if you say a one-liner for structural engineering, it is our job to make things safe and let things stand in a way that no other person can imagine. If you see Burj Khalifa, if you see high-rise towers, if you see any shell structure, even if you see the largest statue that we have built in India, Sardar Vallabhbhai Patel's statue, it is a structure which has a massive foundation and a massive structure built into steel, and it is standing there experiencing a huge amount of wind on it. So before starting my presentation, I would like to introduce what Surpass is. Surpass we started back in year 2012, जहाँ पर हम लोगों का एक विजन था कि जब भी कोई इंजीनियर कॉलेज से पास होता है तो देयर इज अ गैप बिटवीन व्हाट दैट पर्सन इज लर्निंग इन कॉलेज एंड व्हाट ही इज एक्सपीरियंसिंग इन रियल इंडस्ट्री. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉलेज में हम लोग नहीं सीख पाते, पर जब हम लोग इंडस्ट्री के अंदर काम करने जाते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि बहुत सारी पीसेस मिस हो जाते हैं, ज्वाइन नहीं होते. कॉलेज में कुछ पढ़ा होता है, कॉलेज से पढ़ने के बाद हम लोगों को रियलाइज होता है कि कुछ और ही नया एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें पता नहीं होती. सो वी थॉट ऑफ teaching students what industry exposure is, let students work on some real-time projects and teach them softwares along with doing practical projects, जिससे कि एक हाइब्रिड मॉडल के अंदर आपको सॉफ्टवेयर भी समझ में आ रहा है और उसी के साथ साथ आपको ये भी समझ में आ रहा है कि उसको बिल्डिंग को डिजाइन कैसे करना है, या उस स्ट्रक्चर का जो आपने मॉडल बनाया या कोई भी एनालिसिस करा है वो क्या हुआ है, बैकग्राउंड क्या है उस चीज की. In 2012 we started this thing. We approached a lot of colleges and we trained around 1000 students at that time. 1000 plus students हम लोगों ने train करे. People are doing good in life, but it was a restriction क्योंकि physical model के अंदर आप बहुत ज़्यादा लोगों को touch नहीं कर सकते. In lockdown period, we realized that we have to harness the power of online teaching, and we started Surpass hybrid model, in which we introduce students to the webinar series. We make them understand what we are teaching through our free webinars, and then expose them to our online courses which are available, and plus offline courses if they wish to take it in our centers. So this is the background of Surpass. And Surpass is also engaged in teaching interior design students, architecture students, plus industry like motivation sessions. If you say like just not the technical part, we want to teach students how they can build their own consulting firms, how they can start their own services, how they can build on a huge empire, being motivated, know the management part also. So together, if you see who the people who have worked with us, I would like to introduce Kritik Kothari also. He has been an integral part of the system and he has joined the seminar right now. So Kritik has brought the motivation part, the management part, plus the sales part, because आप कभी भी काम करते हैं तो आपको बहुत सारे एस्पेक्ट ऐसे होते हैं जो सिर्फ इंजीनियरिंग से नहीं आते, आपको लाइफ में सेल्स का भी सीखना बहुत जरूरी है. तो हम लोगों ने कृतिक के साथ बहुत सारे सेशंस किए हैं, and he has also joined here. So I welcome Kritik Kothari also. And Thank you, Siddharth. we have Shantanu Sharma, is the director of Surpass Pro India Private Limited. Mr. Arun Kumar Sharma, they both are integral part of the company and they bring in the architecture and the knowledge part जो कि हम लोगों ने develop करा है course. उनके लिए हम लोगों ने ये बहुत सारी चीजें उनसे सीखी हैं, बहुत सारे modules उनसे लिए हैं, उसके बाद हम लोगों ने Surpass को start करा है. Then we have architect Divya Sharma with us, जो कि लैंडस्केप आर्किटेक्ट हैं, काफ़ी प्रोमिनेंट, उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करे हैं एंड शी हैज़ एक्सपर्टीज इन लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स आल्सो, जो कि वो सरपास के अंदर टेकअप करेंगी आने वाले सेशंस के अंदर. देन वी हैव प्राची मेहता. प्राची मेहता इज अवर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, जो कि सारा बैकग्राउंड देखती हैं. शी हैज़ हैंडल्ड ऑलरेडी अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट इन उदयपुर, INFD उदयपुर, and she takes care of all the management and how the courses should be delivered to the students. So this is our team, and I would like to welcome Ms. KP Mundra, ma'am.
she's our guest for this panel discussion. And Praful Kothari, sir, he is also one of the guests for these sessions as introduced before by Prachi. So without further delay, I would like to start. Hi, Praful. I would like to start the presentation now. So we will be having a panel discussion at the end of this presentation where we'll be talking to all these experts so that we get to know that what is actually happening in the industry, because presentations get restricted to a lot of things which I feel is correct. But the motive of this webinar is that we should engage into a generic discussion, into a discussion where we will understand how things work in structural engineering and get inputs from other experts also, just not me. So this is the motive behind this particular presentation. So I would like to share my screen and start my presentation now. If my screen is visible, I can get a thumbs up from anyone, or anyone can say yes, that screen is visible. Yes. Yes, screen is visible. So Rahul Mathur sir has also joined us. I would again like to welcome Rahul Mathur sir into our session. He is a very senior structural engineer who has been working as a consultant by the name of firm Guru Ishwar Consultants Private Limited. He also owns a soil testing facility, and he is a concrete expert who has worked in Ambuja for a very long time. So welcome, sir. Hello. So let us start the presentation now. Introduction to structural engineering using STAAD Pro. What is our agenda for this particular meeting? I would be starting with what are the basics of structural engineering that you should know, then moving into structural design considerations, that what all considerations are there which you need to make while you're doing an analysis. Then we will shift into what STAAD Pro is, how you can design RCC structures, steel structures, and what are the advantages of this particular software. We will again use software to see what is the particular workflow that you have to maintain into using this software. सारा काम करने के लिए कुछ कुछ टूल्स हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप जब नॉर्मल सॉफ्टवेयर से सीखते हैं या किसी बेंटली की वेबसाइट से भी सीखते हैं तो एक प्रोसेस बताते हैं वो लोग आपको, पर सरपास के अंदर डिफरेंट है. वी विल बी यूजिंग हैंड्स ऑन टूल्स जहां पर हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से बेस्ट प्रैक्टिसेस स्टैट के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग फटाफट मॉडलिंग करके डिजाइन तक पहुंच सकते हैं. यहाँ पर इस पर्टिकुलर वेबिनार में वर्कफ्लो के अंदर मैं एक छोटा सा मॉड्यूल लेऊंगा जहाँ पर मैं पूरी बिल्डिंग को डिजाइन करके आपको बताऊंगा एंड टू एंड. सो दिस इज द वेबिनार इज ऑल अबाउट. इट्स अबाउट इंटीग्रेटिंग स्ट्रक्चरल नॉलेज एंड STAAD Pro. Then we will see what advanced analysis options are available in STAAD. This is a separate topic. It is a very big topic when you see that you have buckling analysis, you have cable analysis, you have pushover analysis available, you have P delta analysis available in STAAD. All these advanced analysis options are very much important when you are designing a very high-rise building. If you say you're designing G+40, or if you're going up to G+100, STAAD is capable of handling high-rise structures, but then there is a limit to it. We will discuss that thing in upcoming webinar series because the time for this particular webinar would be limited. And then we will see how STAAD Pro is integrated with other softwares, right? So just not STAAD, it's just not STAAD. You have to do the modeling part in STAAD. Then you have for the foundation part, you have STAAD Foundation Advanced. For designing of RCC and beam elements, you have RCDC. For taking flat slab designs, you have RAM structural systems, RAM elements. And for designing of foundations, you have RCDC FE also. So STAAD has come up, like Bentley has come up with a particular set, which they call as structural design workflow, where they have a lot of different softwares, which we will be introducing in our STAAD course. And this particular workflow takes end-to-end solutions for drafting to detailing to BOQ generation. And this is what important right now, because you have to have an engineer who is able to do
STAAD modeling part, designing part, then do editing, detailing part, and BOQ also, generate BOQ, and then give it to the drafting and the secondary team who can handle the project and can make arrangements of assembling those drawings or doing the delivery part. But it is very important for a structural engineer to understand end-to-end delivery. अगर आप सिर्फ एक चीज समझते हैं कि स्ट्रक्चर वाले ने अपना काम कर दिया, उसने ड्राइंग डिलीवर कर दी, उसके आगे उसको कुछ नहीं देखना, तो वो बिल्कुल गलत है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्डिंग पे तब तक होती है जब तक कि बिल्डिंग फाइनली डिलीवर नहीं हो जाती या ऑपरेशनल नहीं हो जाती, क्योंकि कल को कोई भी प्रॉब्लम अगर बिल्डिंग के अंदर आ रही है या कल को बिल्डिंग परफॉर्म नहीं कर रही प्रॉपरली स्ट्रक्चरली, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। Then we will have a case study of a building that we have done for Tata Nestin and a project of a hospital building in Navamundi. So we will discuss that project also in the ending. So let us start. What a structural engineer is doing and what structural engineering is. Basically, if you see what structural engineering involves, it is understanding architectural requirements, engineering challenges, industrial process requirements, environmental conditions, force systems, load assessment for the analysis and design of a structure. It is just not a single thing that you have to design a building, just put some loads, make a model, get the output, and it is done. You have to fundamentally understand all of the fields also. आर्किटेक्चर में आपको ये चीज समझनी जरूरी है कि आर्किटेक्चर इंटीग्रेशन किस तरीके से होगा, आपको कॉलम्स और बीम्स कैसे लेने हैं कि जो कि एस्थेटिकली अच्छे दिख रहे हैं, आपको प्रोसेस वालों से इनपुट ये लेने हैं कि कितना लोड एक्चुअली आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर आप देखते हैं किसी भी फील्ड के अंदर तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोग स्ट्रक्चरल इंजीनियर के अलावा कोई असेस नहीं कर पाता कि आपको कितना लोड लेना है। MEP वाला भी आपको जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पंपिंग कंसल्टेंट होता है वो कुछ लोड्स बताता है, पर वो भी बहुत जेनरिक लोड्स होते हैं। एट द एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द प्रैक्टिकल लोड दैट इज कमिंग ओवर द बिल्डिंग। इसी तरीके से प्लांट के प्रोसेस को समझना, किस तरीके के इक्विपमेंट्स बिल्डिंग के ऊपर आ रहे हैं, कौन सी चीज किधर टिकेगी आके, कौन से स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए हमें किस टाइप की फाउंडेशन सिस्टम्स लेना है, किस टाइप का स्ट्रक्चरल सिस्टम लेना है, ये सारी अंडरस्टैंडिंग एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर को होनी चाहिए बिफोर दे स्टार्ट वर्किंग इनटू दिस फील्ड। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉलेज में हमारे को स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग तो पढ़ाई जाती है, पर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का ये एस्पेक्ट नहीं पढ़ाया जाता कि जो आपको सिर्फ एक्सपीरियंस के साथ आता है या जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं तब आपको ये चीज समझ में आती है। तो हाउ अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर इंटरेक्ट्स विद अदर फील्ड्स, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस तरीके से स्ट्रक्चरल इंजीनियर इंटरेक्ट करता है बाकी सारी फील्ड्स के साथ। So obviously architects, civil engineers, construction management team, mechanical engineers, electrical engineers and geotechnical engineers, ये ऐसी डोमेन्स हैं जिनका इंटरेक्शन स्ट्रक्चरल इंजीनियर के साथ रेगुलरली होता रहता है। अगर आप आर्किटेक्ट के साथ काम करेंगे तो आपको कोलैबोरेट करना पड़ेगा स्ट्रक्चरल डिजाइन, एस्थेटिक्स और फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को समझने में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पर आप कुछ प्लान ऐसा कर रहा है आर्किटेक्ट जहाँ की उसकी बिल्डिंग के अंदर कॉलम्स ही नहीं ले रहा है वो, और फाइनली प्लान सारे फाइनल हो गए और बाद में पता चल रहा है कि हम लोग वहां पर बीम नहीं ले सकते, कॉलम नहीं ले सकते, या उस चीज को खड़ा नहीं कर सकते, या वो चीज अनसेफ हो रही है। तो हमें आर्किटेक्ट के साथ रेगुलरली डिस्कशंस करने होते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है बिल्डिंग की फंक्शनैलिटी में और कितना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल सेफ्टी। आर्किटेक्ट ये चीज अच्छे से समझता है कि स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, अच्छी स्टेबल स्टेट में मेंटेन करने के लिए उसको प्रॉपर फ्रेमिंग स्ट्रक्चर देना है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक देम क्लियरली अंडरस्टैंड दैट if they are making compromises in the designs, it will reflect in the future. So structural engineers incorporate their analysis part into the drawings and provide the architect a final layout जहाँ पर सारे column placement, beam placements होते हैं, and then they again discuss and redo the working. सिविल इंजीनियरिंग टीम जो कि साइट पर काम कर रही है उसके साथ स्ट्रक्चरल इंजीनियर को बहुत प्रोफिशिएंट होना पड़ता है उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को समझने के लिए कि वो कितना चीज समझ पा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई स्ट्रक्चरल इंजीनियर ये नहीं समझ पा रहा कि साइट पे क्या हो रहा है, या साइट पे वो सोचे कि मैंने तो ड्राइंग्स डिलीवर कर दिए, अब साइट वाला जो है वो फाइनली करे। सिविल इंजीनियर नॉर्मल जो कि स्ट्रक्चर्स पे काम नहीं कर रहा है उसकी मेंटालिटी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उनके साथ कोलैबोरेट करके साइट के ऊपर क्या डेवलपमेंट हो रहा है,
ट्रांसपोर्टेशन में टाइम तो नहीं लग रहा। मैं आपको एक बहुत बेसिक चीज़ बताता हूँ, एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मेरे साथ रिसेंटली हुआ। वी वर डिजाइनिंग अ पोर्टल फॉर वॉलकैम एंड सडनली जब साइट पे हम लोग गए तो हमें रियलाइज हुआ डिजाइन पार्ट वाज एवरीथिंग वाज गुड, कंक्रीट का भी एलिमेंट बिल्कुल बढ़िया था, कंक्रीट मिक्सिंग प्रॉपर हो रही थी, एवरीथिंग वाज गुड, डिजाइन हो गया, ड्राइंग्स बन गए, उसी बेसिस पे काम भी एग्जीक्यूट हो गया। जब साइट के ऊपर वो लोग कास्टिंग के लिए आए तो जस्ट एक सिविल इंजीनियर ने एक पॉइंट रेस करा कि सर हमारे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि जब हम कंक्रीट पोर कर रहे हैं तो वो सेटल बहुत जल्दी हो रही है, और सेटलमेंट इतना फास्ट हो रहा है कि हम लोग उसको, क्योंकि इट्स अ पोर्टल, अंडरग्राउंड आप जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा आपको विजिबिलिटी नहीं रहती, बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं रहती चीज़ों की, तो आप वाइब्रेटर आराम से नहीं चला सकते बिल्डिंग के अंदर, और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है आइडेंटिफाई करने में कि कंक्रीट एंड पॉइंट्स तक पहुंची भी या नहीं पहुंची। सो दे टोल्ड अस कि इतना प्रॉब्लम आ रहा है हमारे को, जबकि हमने मिक्स डिज़ाइन फॉलो करा है, प्रॉपर मिक्स डिज़ाइन फॉलो करा है। द प्रॉब्लम वॉज इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन टाइम, और कितना अमाउंट ऑफ कंक्रीट वो लोग जनरेट कर रहे थे और कितनी दूर से उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। सो फाइनली व्हाट हैपेंड कि जब वो सिंगल रोलर को यूज करके, मिक्सर को यूज करके ट्रांसपोर्ट करते थे, कंक्रीट डालते थे, जब तक वो कंक्रीट सेटल हो जाती थी, क्योंकि वो लोग हाई ग्रेड कंक्रीट यूज कर रहे थे पोर्टल पर्पस के लिए, तो जनरली उसका सेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। बट देन आफ्टर डिस्कशन वी रियलाइज दैट कि अगर हम 2 मिक्सर्स यूज कर रहे हैं तो हम ऑपरेशन टाइम कम कर सकते हैं, और ऑपरेशन टाइम कम करते ही हम लोगों का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। सो दिस वाज अ वेरी बेसिक थिंग जो कि सिविल इंजीनियर साइट पे डिस्कशन करके रियलाइज हुआ। अगर स्ट्रक्चरल इंजीनियर साइट पे जाता नहीं, या मैं कभी साइट पे जाता नहीं और उसको ये एड्रेस नहीं करता, तो मुझे भी पर्सनली कभी एक्सपीरियंस नहीं होता कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं, हम डिज़ाइन सही दे रहे हैं पर वो एग्जीक्यूट सही हो रहा है या नहीं। थर्ड इज कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के साथ कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि भाई कितनी स्पीड से काम करना है, कितनी स्पीड से ड्राइंग्स जनरेट होंगी, और कंस्ट्रक्शन के क्या चैलेंजेस हैं, क्या चीज़ हमारे को मॉडिफाई करनी पड़ेगी डिज़ाइंस में, और कितना फास्ट हम काम कर सकते हैं, वो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का पार्ट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोटेक जो है, ये 3 ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ से आपको रेगुलरली इंटरेक्शन करना होता है। आपकी प्लम्बिंग सर्विसेज कहाँ से जाएंगी, आपको किस तरीके से इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स के बारे में ध्यान रखना है कि कहीं कंड्यूट ऐसा तो नहीं डाल दिया हमने कि कोई ऐसा होल्स तो हम नहीं छोड़ रहे बाद में बीम के अंदर जो कि इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हमें पहले से प्लान करनी होती हैं। इवन द फॉल सीलिंग पार्ट, बहुत बार फॉल सीलिंग लोड्स भी लोग लेना भूल जाते हैं, जो कि कंसिडरेबल होते हैं। एंड लास्ट इज जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी सॉइल इन्वेस्टिगेशन के बिना स्ट्रक्चरल इंजीनियर के हाथ फाउंडेशन डिजाइन कर ही नहीं सकते। अगर कोई आपको ये प्रमोट कर रहा है कि आप लोग विदाउट सॉइल टेस्ट कोई चीज़ डिज़ाइन कीजिए, तो वो सही नहीं है, और आप उसको ये समझाइए कि आपको सॉइल टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको बाद में इकोनॉमी देगा। बहुत बार ऐसा होता है कि नए इंजीनियर जो हैं वो क्लाइंट से डर जाते हैं, वो रियलाइज करते हैं कि अरे क्या करना है, कुछ अज्यूम कर लेंगे या कोड से अज्यूम कर लेंगे। बट इफ़ यू सी द ओवरऑल सिचुएशन, जहाँ पर आपको रॉक एनकाउंटर नहीं हो रही है, वहाँ पर आपको जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए और जियोटेक इंजीनियर की हेल्प लेनी चाहिए। Next, let us start with the basics of structural engineering. So I would just speed up a little bit now so that we complete the presentation on time, have time for panel discussion also. अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चरल इक्विलिब्रियम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है किसी भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए, वो ये है कि उसको ये समझना है कि हमें सीजी बैलेंस करनी है। अगर हमने सीजी समझ ली तो आधा काम हो गया। जो भी चीज खड़ी हुई है, जब भी हम खड़े होते हैं, हमारी बॉडी का भी हम सीजी बैलेंस कर रहे हैं, या कोई भी स्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं वो तभी इक्विलिब्रियम में आएगा जबकि उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रॉपरली एडजस्टेड है। सो इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट center of gravity is appropriately located within the structure to maintain equilibrium and stability. And अगर इंजीनियर का वैसे एक आउटलुक है चीज़ों को देखकर ये समझने का कि क्या चीज़ कितने प्रोपोर्शन पे खड़ी हो सकती है, तो आधा काम वहीं पे हो जाता है, क्योंकि एक अलग विजन आपको चाहिए। जब आप किसी स्ट्रक्चर को देखते हो तो आपको रियलाइज हो जाता है कि यार ये सिलेंडर है, या ये चीज़ ज़्यादा पतली है, या साइड पे जाते ही आपको रियलाइज होता है कि कुछ दिक्कत है या कुछ गड़बड़ है साइड के ऊपर। ये एक इंट्यूशन स्ट्रक्चरल इंजीनियर को हमेशा डेवलप करना चाहिए कि साइट पे जा जाके देख के कि क्या चीज सही हो रही है, क्या चीज गलत हो रही है। सो इफ यू सी स्ट्रक्चरल इक्विलिब्रियम, इट इंटरेक्ट्स विद फोर्स इक्विलिब्रियम आल्सो, देन वी हैव द मोमेंट इक्विलिब्रियम एंड देन द स्टेबिलिटी पार्ट। अगर फोर्स इक्विलिब्रियम, मोमेंट इक्विलिब्रियम एडजस्टेड नहीं है बिल्डिंग के अंदर, तो आपकी बिल्डिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, और स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं पे सेटल होएगा, या कहीं ना कहीं उसमें क्रैक आएगा, या कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी।
स्टेबिलिटी भी बहुत जरूरी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के एस्पेक्ट से। क्यों? क्योंकि अगर आपका स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है, जैसे केसेस ऑफ रिटेनिंग वॉल्स और ऐसी बहुत सारी वॉल्स जहाँ पर हमें गेबियन वॉल बनानी है या कोई पर्टिकुलर डैम बनाना है या किसी वाटर टैंक को डिजाइन करना है जहाँ पे फ्री कैंटिलीवर वॉल्स खड़ी हो रही हैं, वहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड स्टेबिलिटी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बैलेंस करना। सीजी बैलेंस करने के लिए हमारे को हमारी फुटिंग का साइज बढ़ाना पड़ता है, एंड दैट विल अगेन डिपेंड ऑन द जियोटेक्निकल एस्पेक्ट की किस टाइप की सॉइल फाउंडेशन है नीचे, किस तरीके का हम लोगों को काउंटर वेट डेवलप करना है उस चीज के ऊपर। सो यू सी ऑल दीज स्लाइड्स आर इंटरकनेक्टेड एंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग इज सो इंटरकनेक्टेड दैट आप किसी भी एक चीज को कम इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। Now we'll start again with what types of loadings are there. So we have everyone knows, I think this is a very basic thing. जब B.Tech में भी हम लोग पढ़ाई करते हैं तो we have the force system. So we will have dead loads, you will have your live loads, and then you have seismic loads, wind loads acting. Along with that, a very important thing is in buildings which are more than 45 to 50 meters, thermal expansion का बहुत important होता है, जो कि बहुत बार engineers मिस कर जाते हैं और बहुत बार हम भी मिस कर जाते हैं, क्योंकि आप अगर मल्टीपल स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं और थर्मल एक्सपेंशन का ध्यान आपने नहीं रखा, एक्सपेंशन जॉइंट्स आपने प्रॉपर लोकेशन पर प्रोवाइड नहीं करे हैं, तो दे कैन क्रिएट लॉट ऑफ इश्यूज एंड कहीं ना कहीं पे वो बाद में क्रैक प्रोवाइड कर सकते हैं आपको। आप देखेंगे तो स्टील बिल्डिंग्स के अंदर आपने नोटिस करा होगा कि थर्मल एक्सपेंशन की जो लिमिट्स हैं वो 100 मीटर तक परमिसेबल हैं, और आरसीसी के अंदर जनरली वी रिस्ट्रिक्टेड टू 40 मीटर्स, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं जाते हैं। So coming back to loads, dead loads, you can see that anything which is permanently acting like the self weight of structure, या कोई ऐसी चीज जो कि permanently statically उसके ऊपर पड़ी रहेगी स्ट्रक्चर के ऊपर या किसी फ्रेम के ऊपर, उसको हम लोग dead loads के कैटेगरी में डालते हैं। Then you have imposed loads or live loads. These particular loads you see you can understand in such a way that these are dynamic loads. हो सकता है कि किसी मॉल के अंदर बहुत सारे लोग फ्लो कर रहे हैं, तो कभी बहुत ज़्यादा सडनली लोड हो गया, फिर वो डीलोडिंग हो गई जब वहाँ पे लोग नहीं हुए। सो एनीथिंग विच इज अ मूविंग लोड विच इज फ्री टू मूव कम्स अंडर लाइव लोड्स एंड इम्पोज्ड लोड्स ऑल्सो। सो दीज आर देयर आर सम लाइव लोड्स विच कैन एक्ट ऑन अ स्ट्रक्चर for few duration of time, like for some months you can have some machinery there which can come into a live load category and then be removed from that particular location. तो live load एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जो कि आपको बहुत ध्यान से यूज करना है। क्यों? आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि कितने ड्यूरेशन के लिए वो लाइव लोड उस पर्टिकुलर लोकेशन पर लग रहा है और उसका इम्पैक्ट कब हट सकता है बिल्डिंग के ऊपर से। ये चीज भी हम लोग इटरेशंस करके मॉडल कर सकते हैं, पर जनरल प्रैक्टिस के अंदर हम लोग बिल्डिंग के ऊपर कंप्लीट लाइव लोड डाल देते हैं, विच इज ऑन अ सेफर साइड। बट कुछ केसेस में अगर आपके पास कंटिन्यूस बिल्डिंग के पैनल्स हैं जहाँ पर आपका स्लैब पैनल्स है कंटिन्यूटी में, तो आपने ये देखा होगा कि एक चीज होती है जहाँ पर हम लोग ऑल्टरनेट पैनल्स को लोड करते हैं लाइव लोड से। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप ऑल्टरनेट पैनल्स के ऊपर लाइव लोड ऐड करते हैं तो आपकी मूवमेंट उन पैनल्स के ऊपर इंक्रीज हो जाती है इन कंपैरिजन टू कि दोनों पैनल साथ में बराबर लोडेड है। देन यू हैव विंड लोड्स। Wind load calculations are very important for structures which experience uplift force like trusses. जब भी हम कोई ट्रस बना रहे हैं या कोई हम शेड डिजाइन कर रहे हैं तो विंड लोड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बिल्डिंग्स के अंदर भी, हाई राइज बिल्डिंग्स में भी विंड लोड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि विंड का इफेक्ट जो है वो स्ट्रक्चर पे 10 मीटर के ऊपर डायनेमिकली इंक्रीज होता है। एंड 875 IS 875 कोड के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोग आगे वाले वेबिनार्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जहाँ पर हमारा टॉपिक पर्टिकुलरली कोड्स के ऊपर रहेगा, पर अभी मैं जस्ट बेसिक्स को टच कर रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा। देन यू हैव सिस्मिक कोड्स, देन स्नो लोड्स एंड थर्मल लोड्स। सिस्मिक लोड्स आर जनरेटेड फ्रॉम द अर्थक्वेक एंड स्टैड के अंदर काफ़ी अच्छे से इंटीग्रेट करा गया सिस्मिक लोड्स को लेने के लिए, जो कि हम लोग इस पर्टिकुलर वेबिनार में देखेंगे। स्नो लोड्स इंडिया के अंदर उन एरियाज में हम लोग कंसिडर करते हैं जहाँ पर स्नो रेगुलरली आती है, एक्सपीरियंस होती है, पर आजकल आप देखोगे तो किसी भी एरिया के अंदर स्नो गिर सकती है। कुछ टाइम पहले उदयपुर जैसे शहर के अंदर भी शेड के ऊपर स्नो गिरी थी, और मेरे ही एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे हमने स्नो लोड कंसिडर नहीं करा था, और वहाँ पे जो उन्होंने ऊपर शीटिंग लगाई हुई थी वो शीटिंग उसकी आराम से क्रैक हो गई। तो इट हैपन्स, सम थिंग्स यू कैन नॉट जज, बट इट वॉज नॉट अ हैजार्ड टू एनीवन्स लाइफ। बट स्टिल स्नो लोड एक ऐसी चीज़ है जो कि इंपॉर्टेंट होती है। अगर कभी बहुत ज़्यादा स्नो पड़ जाती है तो आपकी शीटिंग्स और कहीं ना कहीं वो इशू क्रिएट कर सकती है। थर्मल लोड्स, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट टू यू दैट
एक्सपेंशन के लिए हम लोगों को इनकॉर्पोरेट करने चाहिए और स्टैड के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट करने का प्रॉपर मेथड दे रखा है। सॉइल लोड्स तब एक्ट करते हैं किसी भी बिल्डिंग के ऊपर जब हम कोई अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर बना रहे हैं या फिर कहीं पर हम ऐसी पर्टिकुलर बिल्डिंग बना रहे हैं या कोई ऐसी टनल बना रहे हैं जिसके ऊपर सॉइल एक्ट करेगी एज अ प्रेशर। सो any type of imposed load due to soil can be generated in STAAD and soil load जो डिपेंड करेगा आपकी बेरिंग प्रेशर के ऊपर, वाटर कंडीशंस तो नहीं है। तो पानी के अगर सैचुरेट हो गई सॉइल तो उसकी डेंसिटी उस तरीके से आपको सैचुरेटेड सॉइल की डेंसिटी को कंसिडर करना है। अगर ड्राई सॉइल है तो उसका फ्रिक्शन बेटर होगा इन कंपैरिजन टू सैचुरेटेड सॉइल। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ड्यूरिंग एनालिसिस पार्ट ध्यान रखनी है और सोच के करनी है। हाइड्रोस्टैटिक लोड जो हैं वो पानी के लोड्स हैं जो कि आप वाटर टैंक डिज़ाइन कर रहे हैं या कोई अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं या स्विमिंग पूल भी डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आपको हाइड्रोस्टैटिक लोड्स को कंसिडर करना है। एंड इम्पैक्ट लोड्स होंगे ऐसी लोकेशंस पे जहाँ पे कोई रोटेटिंग मशीन काम कर रही है या कोई ऐसी मशीनरी है जहाँ पर रेगुलरली वाइब्रेशन उसके अंदर आ रहा है, कोई बेल्ट कन्वेयर है, कोई आपकी वाइब्रेटिंग मशीन है, कोई सेंट्रीफ्यूज मशीन है। सो इंडस्ट्री के अंदर इम्पैक्ट लोड्स आपको जनरली हमेशा फैक्टर इन करने चाहिए। और अगर आपको कभी सप्लायर कोई पर्टिकुलर लोडिंग कंडीशन दे रहा है जो कि जिसमें वो ये कह रहा है कि मेरा जो स्ट्रक्चर है वो तो स्टैटिक है, बहुत कम वाइब्रेशन होता है इसके अंदर, तब भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि आप लोगों को वाइब्रेशन के लिए एटलीस्ट 25% मार्जिन एक्स्ट्रा रखना चाहिए एज अ जनरल गुड प्रैक्टिस फॉर अ स्ट्रक्चर इंजीनियर, क्योंकि लोग बहुत बार मिसजज कर देते हैं वाइब्रेशंस को। वो लोग समझते हैं कि वो कम वाइब्रेशन है, बट व्हेन इट एक्ट्स ऑन अ स्ट्रक्चर वो इश्यूज क्रिएट कर सकता है। Now we'll come to how to select the right type of material for a structure. This is very important. क्योंकि आपको ये देखना है कि आपको आरसीसी स्ट्रक्चर पे जाना है, आपको प्योर कंक्रीट में काम करना है। अगर आप देखेंगे अभी जब राम मंदिर का काम हुआ है तो वहाँ पर स्टील अलाउड ही नहीं था, तो सारा काम स्टोन के अंदर हुआ। इनफैक्ट पाइल्स भी जो डीप पाइलिंग करी गई है वो भी स्टोन्स की पाइलिंग करी गई है, वहाँ पे रीइंफोर्स्ड कंक्रीट यूज ही नहीं किया गया है, विच इज अनदर मार्वल आई थिंक, क्योंकि इंजीनियर्स को कूडोज उस चीज़ के लिए कि किस तरीके से दे कैन रीथिंक एंड यूज डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स फॉर द सेम पर्पस। यहाँ पर हम लोग कंक्रीट पाइलिंग करते हैं उसकी जगह स्टोन पाइलिंग करी गई है। सो यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ मटेरियल फॉर मेकिंग एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, पर कॉस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। अगर आप कोई ऐसी स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो कि आरसीसी में अगर आप बना रहे हैं, जैसे बुर्ज खलीफा की बात करेंगे तो इट इज आरसीसी स्ट्रक्चर बनाया गया है, तो इतनी हाइट पे जाने के बाद उसका डेड लोड बहुत बढ़ जाता है। उस पर्टिकुलर सॉइल कंडीशन के लिए उसकी राफ्ट उस तरीके से डिजाइन करी गई, पाइलिंग उस तरीके से डिजाइन करी गई। पर यही चीज अगर स्टील में आप जाते हैं तो उसके अलग बेनिफिट्स हैं, जहाँ पे आपका डेड वेट कम हो जाएगा बिल्डिंग का, बट देन अगेन डिफ्लेक्शंस बढ़ते हैं। तो you cannot just make a decision based on one or two parameters. There are n number of parameters that are required, but to address a few structures, generally हम लोग जब RCC के अंदर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमारे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी ये रहती है कि साइट के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म के अंदर अगर हमारे को आप बताते हैं कि मल्टीपल फ्लोर्स जनरेट करने हैं एंड यू हैव टाइम, सो आरसीसी कंपेयर टू स्टील इकोनॉमिकल पड़ता है। पर देन देयर इज न्यू टेक्नोलॉजी कमिंग इन, जहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स, जहाँ पे आप लोग प्लेट गर्डर्स इस्तेमाल करते हैं, और प्लेट गर्डर्स इस्तेमाल करके आप पूरी बिल्डिंग को फैब्रिकेशन यार्ड में या अपने मशीन लाइन में उसको फैब्रिकेट करते हैं और आगे काम स्टार्ट कर देते हैं, आके सीधा असेंबल करते हैं साइट के ऊपर। तो उस केस के अंदर आप देखेंगे तो नाउ आरसीसी पार्ट एंड स्टील पार्ट इज कमिंग नेक टू नेक दीज डेज। वी आर ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज द स्टील पार्ट जिससे कि हम उसको आरसीसी के इक्विवेलेंट ला पाएं, बट स्टिल आरसीसी डोमिनेट करता है मार्केट को। कंक्रीट जो है वो हमारे को काफ़ी इजीली अवेलेबल है, लेबर उसके लिए काफ़ी इजीली अवेलेबल है हमारे पास, एंड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बिल्डिंग्स डोमिनेट कर रही हैं बिल्डिंग को, बिल्डिंग सेगमेंट्स देखें तो। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स जहाँ पर आपको फास्ट पेस्ड काम चाहिए, जहाँ पे आप चाहते हैं कि जल्दी से हमारे सारे काम हो जाए और जल्दी से हम लोग स्ट्रक्चर खड़ा कर दें और उसके बाद फटाफट हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए, तो आप वहाँ पर स्टील स्ट्रक्चर्स के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको साइट पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको फैब्रिकेशन यार्ड पर चीज़ें बनानी है, उसको लाके असेंबल करना है। So you have concrete structures which are widely used material in construction due to its versatility and durability and strength. सीमेंट, एग्रीगेट, वाटर, ये यूज़ कर करके बहुत स्ट्रक्चर्स बने हैं और सालों से बने हैं। तो स्टील को एनीवे एज अ न्यू कॉन्सेप्ट इंडस्ट्रीज में पहले यूज़ होता था, पर
अब बड़ी कंपनी इसके अंदर आ रही है जहाँ पर कि बिल्डिंग्स भी कंप्लीटली हम लोग स्टील में बना रहे हैं। देन योर स्टील स्ट्रक्चर्स, जहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि प्लेट गर्डर्स इस्तेमाल करके आप इकोनॉमिकल ऑप्शंस डेवलप कर सकते हैं, पर फिर भी द कॉस्ट ऑफ स्टील बिल्डिंग इज कंपेरेटिव इफ यू डू as per our previous experiences, I think बहुत वेग है, but then there is a difference of at least 10, 15 to 20%. It can vary in the costing part. Then wooden structures are there. बहुत सारे हमारे ऐसे एरियाज हैं इंडिया के जहाँ पे वुडन स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। वुडन स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली मैं नहीं मानता, क्योंकि आप सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वुडन स्ट्रक्चर्स के लिए हमारे को बहुत पेड़ काटना पड़ता है, तो स्केलेबल तो नहीं है इन एनी केस। बट देन इट्स अ नेचुरल मटेरियल विद गुड स्ट्रेंथ, तो डेफिनेटली वुडन स्ट्रक्चर्स अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बनाना चाहते हैं तो वो स्ट्रक्चरली डिजाइन हो सकता है। मेसनरी स्ट्रक्चर्स तो रेगुलरली इंडिया में बनते ही आ रहे हैं। हमारे गाँव के अंदर स्टोन मेसनरी हो गई, हमारे पुराने किले हो गए जो कि बने हुए हैं सारे, वो सब स्टोन मेसनरी से बने हुए हैं। दे हैव वेरी हाई स्ट्रेंथ। उनको आप अगर कंक्रीट की बिल्डिंग से भी कंपेयर करेंगे, आरसीसी बिल्डिंग से, तो भी उनकी बेटर लाइफ परफॉर्मेंस एनी डे बेटर है, भले ही पुरानी बिल्डिंग बनी हुई हो। बट स्टोन मेसनरी में हमारे को एक लिमिटेशन ये होती है कि हम लोग बहुत ज़्यादा हाई राइज नहीं जा पाते, क्योंकि हम लोग उसके अंदर फ्रेम स्ट्रक्चर का इफेक्ट नहीं पकड़ पाते हैं, जो हम अभी आगे देखेंगे प्रेजेंटेशन के अंदर। देन यू हैव कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर्स। कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग दो अलग अलग मटेरियल यानी कि स्टील और कंक्रीट, स्टील से मेरा मतलब है माइल्ड स्टील, नॉट द टॉर बार। माइल्ड स्टील और कंक्रीट को एलिमेंट को एक साथ यूज कर सकते हैं। कोई ऐसी पर्टिकुलर लोकेशन है जहाँ पर हमारे पास रीइंफोर्समेंट बांधने के लिए टीम्स अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग वहाँ पर स्टील बीम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ISMB गर्डर्स का, उसको कंक्रीट में एनकेज भी कर सकते हैं टू डेवलप अ composite behavior, and that particular composite behavior can be modeled in STAAD and that can also be designed. एग्जैक्ट डिजाइनिंग मॉडल्स अवेलेबल नहीं है, पर आप लोग बेंडिंग मोमेंट और उसके जो पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, उस पर स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर सकते हैं, देन यू कैन टेक अ डिसीजन। देन यू हैव नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। समटाइम्स हम लोग ग्लास को भी एज अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट यूज करते हैं। अगर हमें कोई ग्लास स्विमिंग पूल बनाना है, वी कैन यूज एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर्स आल्सो फॉर सम पर्टिकुलर स्मॉल केबिन्स, जैसे MCC पैनल रूम्स हैं या अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि हमें स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स करने हैं जहाँ पे लाइट वेट होने चाहिए बिल्कुल, या छत के ऊपर हमें कोई पर्टिकुलर छोटा सा केबिन बनाना है, तो हम लोग एल्यूमिनियम और ग्लास के अंदर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देन देयर इज अनदर न्यू थिंग कमिंग अप विच इट्स नाउ कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, बट इट इज स्टिल एक्सपेंसिव। तो हो सकता है फ्यूचर में हम ऐसी ऐसी शेप्स देखें 3D मॉडलिंग के थ्रू या 3D मशीन्स के थ्रू, जो कि सीधा कार्बन फाइबर का एक लिक्विड टाइप घोल होगा, जो कि एक पूरी स्टील की बिल्डिंग हटा दीजिए, RCC बिल्डिंग हटा दीजिए, सिर्फ कार्बन फाइबर एलिमेंट्स को यूज कर करके वी वुड बी एबल टू जनरेट 3D स्ट्रक्चर्स, और उसके अंदर हम रह पाएंगे कॉम्प्लेक्स शेप्स यूज करके। नाउ लेट अस कम टू स्ट्रक्चरल डिजाइन वर्कफ्लोज। स्ट्रक्चरल डिजाइन वर्कफ्लोज जो हैं हमारे, उसके अंदर आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि फर्स्ट चीज जो आपको करनी है वो है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए है कि उसको ये समझ में आए कि क्या पर्पस है बिल्डिंग का, फंक्शनैलिटी क्या है, कंस्ट्रेंट्स क्या है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, और सारी इंफॉर्मेशन साइट से गैदर करके आर्किटेक्चर प्लान्स को समझने के बाद ही हैज टू डिसाइड हिज स्ट्रक्चरल सिस्टम। देन यू हैव सेकेंड स्टेज, यहाँ पे प्रिलिमिनरी डिजाइन निकालते हैं। प्रिलिमिनरी डिजाइन का मतलब ये है कि आपको डेवलप करना है कंसेप्चुअल डिजाइन, जहाँ पे आप ये चेक करेंगे कि यार बेसिक फोर्सेस क्या आ रही हैं इस बिल्डिंग के ऊपर, बेसिक बेंडिंग मोमेंट्स क्या जनरेट हो रही हैं, बेसिक शियर फोर्सेस क्या आ रही हैं, बेसिक कितना सेक्शन रिक्वायर्ड है, स्टील ज़्यादा ऑप्टिमम आ रहा है या कॉन्क्रीट ज़्यादा ऑप्टिमम आ रही है, क्या चीज़ ज़्यादा लाइट वेट रहेगी, किस टाइप का स्ट्रक्चर डिजाइन करना ज़्यादा इकोनॉमिकल रहेगा। ये सारे एस्पेक्ट्स आप प्रिलिमिनरी डिजाइन के अंदर तैयार करते हैं, जहाँ पे आप फ्रेमिंग डिजाइन करके आर्किटेक्ट के साथ डिस्कस करते हैं कि ये मेरी प्रिलिमिनरी ड्राइंग्स है, आप इसको रिव्यू कीजिए। देन कम्स द स्ट्रक्चरल एनालिसिस पार्ट, जहाँ पे हम लोग फाइनल 3D मॉडलिंग बनाते हैं। STAAD Pro यूज कर सकते हैं आप ETABS यूज कर सकते हैं, आप RAM स्ट्रक्चरल सिस्टम यूज कर सकते हैं, आप टेक्ला का यूज कर सकते हैं सिस्टम। तो कोई भी सिस्टम अगर आप यूज कर रहे हैं किसी भी कंपनी का, दैट इज अप टू यू। बट STAAD जो है वो बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है, काफ़ी सारी इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है। तो एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि आपको दूसरा इंसान, जैसे आप समझिए कि आज हम सब लोग किसी पर्टिकुलर
इंस्टाग्राम के ऊपर हैं, तो सेम प्लेटफॉर्म पे हैं। तो जब एक सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर लोग होते हैं तो बहुत आसानी से काम हो जाता है आपका। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को पहले सीखें, और प्रोसेस सारे सॉफ्टवेयर का सेम है। तो अगर आपने एक सॉफ्टवेयर पर स्ट्रक्चरल एनालिसिस सीख लिया तो आपका काम बन जाता है। उसके बाद आप उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अलग सॉफ्टवेयर सीखने के अंदर। लेट मी जस्ट चेक इफ समवन इज वेटिंग इन द लॉबी। यस, नाउ comes the important part, that is the design of structural elements. आपने एक बार एनालिसिस कर लिया जहाँ पर आपके पास सारी फोर्सेस आ गई, यानी कि आपका बेंडिंग मोमेंट आ गई, आपका शेयर फोर्स आ गई, आपका डिफ्लेक्शंस की कैलकुलेशंस आ गई। इन सारे एलिमेंट्स को यूज करके आप फाइनल डिजाइन एलिमेंट का करते हैं, जहाँ पर आप बीम का डिजाइन अलग करेंगे, कॉलम का डिजाइन अलग करेंगे, स्लैब एलिमेंट का डिजाइन अलग करेंगे और फाउंडेशंस का डिजाइन अलग से करेंगे। हर एक चीज को डिजाइन करने के लिए स्टैड के अंदर अलग अलग मॉड्यूल्स दिए गए हैं, जिसको यूज करके हम वो पर्टिकुलर काम को कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है लास्ट में, डिटेलिंग एंड ड्राइंग प्रिपरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आपने डिज़ाइन सही कर भी दिया और डिज़ाइन सही होने के बाद अगर आपकी डिटेलिंग टीम ने काम सही से नहीं करा, तो आपको ये पता चलेगा कि जो चीज़ आपने डिज़ाइन करी थी, आपने सब कुछ सही करा था काम पर, वो काम साइट पर जाते आते गलत एग्जीक्यूट हो गया। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर टू पर्सनली रिव्यू ऑल दी स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स एंड डिटेल्स। जितने एलिवेशन है, जितने सेक्शन और शेड्यूल्स हैं, ये सारी चीज़ें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम प्रॉपरली एक बार गो थ्रू करें और एक अच्छे नज़रिए से निकालें और एक पीयर रिव्यू भी करवाएं। तो ये तो हुआ पार्ट हमारा स्ट्रक्चरल वर्कफ्लो का, जो कि आपको फर्स्ट इन हैंड करना है, दैट इज फेज 1, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, प्रिलिमिनरी डिज़ाइन करना है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस करना है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स का डिज़ाइन करना है और डिटेलिंग बनानी है। पर ये काफ़ी नहीं है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है रिव्यू एंड मेंटेनेंस वर्कफ्लो, जहाँ पर आपको देखना है कि आपने जो डिज़ाइन करा है उसका पीयर रिव्यू करवाइए किसी से, या फाइनल अप्रूवल्स लीजिए। आपकी कंपनी के अंदर ऐसे लोग होने चाहिए जो कि उस चीज़ को आपके अलावा भी खुद जज करें और खुद अंडरस्टैंडिंग हो उनके पास, जो कि उसको डिज़ाइन कर पाएँ प्रॉपरली और उस डिज़ाइन को रिव्यू कर पाएँ फाइनली। देन कंस्ट्रक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज के अंदर आपको ये देखना होता है कि जो चीज़ आपने साइट पर कम्युनिकेट करी थी वो नेसेसरीली सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ पहुँच गई है, आपके साइट इंजीनियर्स को सारी क्वेरी समझ में आ गई हैं, उनको बिल्डिंग डिज़ाइन करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, या वो कोई इशू तो नहीं आ रहा है उनको अंडरस्टैंडिंग करने में कि भाई ड्राइंग्स में क्या लिखा हुआ है वो समझ ही नहीं पा रहे हैं साइट के ऊपर। ये बहुत बार होता है कि हम लोग ड्राइंग में कुछ चीज़ लिखते हैं और ड्राइंग में लिखने के बावजूद भी लोगों को समझ में नहीं आता कि फाइनली करना क्या है। आप भले ही 50 ड्राइंगें दे दें किसी को, पर अगर वो ड्राइंग समझ नहीं पा रहा तो इट इज़ ऑल नो गुड। So it is your responsibility to make them understand those drawings properly. Then comes the testing and quality assurance part. Now this is, some people say, is not exactly in the scope of a structural engineer, but I think अगर आपको फील्ड में ग्रो करना है, इस फील्ड के अंदर अगर आप चाहते हैं कि आपको एक होलिस्टिक व्यू हो और आप अपनी खुद की कंसल्टिंग फर्म चालू करना चाहते हैं, तो आपको ये 3 एस्पेक्ट्स भी समझने बहुत ज़रूरी हैं, दैट इज टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस, मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग एंड रेट्रोफिटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स को भी नॉलेज होनी आपको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि टेस्टिंग और क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर ये होगा कि आप बिल्डिंग के ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और आफ्टर कंस्ट्रक्शन आपको नॉलेज मिलेगी। आप कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आप उसकी साइट विजिट कीजिए, उसके बाद आपको 50 चीज़ें निकल के आएंगी जो आपने साइट पे एक्सपीरियंस करी है, और कुछ इंजीनियर्स आपको बताएंगे कि आपने ड्राइंग के अंदर ये चीज़ दी थी पर हमने इसको इस तरीके से करा। तो बहुत बार साइट के एक्सपोजर से ये होता है कि आपका विजन खुलता है। बहुत बार हम कमरे में बैठे हुए हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर ड्राइंग बना रहे हैं, वो सफिशिएंट नहीं होता। साइट पे जाने के बाद हमारे को रियलाइज़ होता है कि बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जो कि इम्प्लीमेंट हो सकते हैं और साइट एग्जीक्यूशन में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। तो टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये सब चीज़ें नोटिस करें। मैं जो लिस्ट आपको बता रहा हूँ उसमें मैंने लिखी नहीं हुई है कि आपकी कंक्रीट प्रॉपर्ली जनरेट हो रही है नहीं हो रही, कंक्रीट जो कास्टिंग हो रही है उसमें प्रॉपर वाइब्रेटर इस्तेमाल हो रहा है नहीं हो रहा, आपकी शटरिंग जो है वो प्रॉपर है या नहीं है, शटरिंग के अंदर कोई होल्स तो नहीं है, शटरिंग जो इस्तेमाल करेगी वो टाइटली पैक्ड है, ऐसा तो नहीं हो रहा कि स्लरी लीक हो रही है आपकी, आपके ड्यूरिंग कंक्रीट मिक्सचर भी जो एग्रीगेट्स हैं प्रॉपर्ली वॉश्ड हैं,
प्रॉपर मिक्सचर फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा, मिक्स डिज़ाइन फॉलो हुआ है नहीं हुआ, स्टील जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं साइट के ऊपर उसकी टेस्टिंग हुई है नहीं हुई है। हर 10 मीट्रिक टन के बैच के बाद एक आपको सैंपल टेस्टिंग लैब में भेजना चाहिए, जहाँ पे आपको देखना चाहिए कि प्रॉपर मटेरियल सप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है, या स्टील की प्रॉपर स्ट्रेंथ मिल रही नहीं मिल रही। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जहाँ पर हम लोग मिस कर जाते हैं, प्राइमरी मिल्स और सेकेंडरी मिल्स का कॉन्सेप्ट है। अगर आप देखेंगे कि भाई कोई प्राइमरी मिल है जहाँ पे जैसे टाटा बना रहा है या जिंदल बना रहा है स्टील, तो वो लोग जो क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो सेकेंडरी मिल्स जो कि फर्नेस का इस्तेमाल नहीं कर रही, मतलब उनकी जो ओवर है वो रिफाइंड नहीं है, वो कभी कभार बैचेस के अंदर आप देखेंगे तो वहाँ पर वेरिएशन आ जाता है क्योंकि वो उतना प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये देखें कि कोई प्रॉपर डक्टिलिटी आपको मिल रही है नहीं मिल रही। कोई ऐसा तो नहीं है ब्रिटल मटेरियल या ब्रिटल स्टील तो आपकी साइट पे इंस्टॉल नहीं हो गया जो कास्ट हो गया, क्योंकि एक बार कास्टिंग होगी तो उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो प्रॉपर मॉनिटरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ मेंटेनेंस के दौरान आपको ये देखना है कि बिल्डिंग में जो सर्विसिबिलिटी का एस्पेक्ट है वो आपने बना दी, आपने स्टील की एक बिल्डिंग बना दी जहाँ पे कोरोसिव एनवायरनमेंट था, पर अगर उसकी प्रॉपर पेंटिंग या बाद में उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो रही है या कोई वियर एंड टियर हो रहा है, उसको प्रॉपर्ली उस टाइम पे रिपेयर नहीं करा गया है, तो भले ही वो अपने सर्विस पीरियड में काम करेगी पर उसकी लाइफ डिग्रेड होती जाएगी धीरे धीरे। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप इम्प्लीमेंट करें एक मॉनिटरिंग सिस्टम। हो सकता है कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पास सारे ऐसे टूल्स ना हो, सो ही कैन ऑलवेज कोलैबोरेट विद द कंस्ट्रक्शन टीम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम और विद अ मॉनिटरिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस टीम, जहाँ पर वो ये सर्विसेज को भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। देन द लास्ट पार्ट इज रेट्रोफिटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि कभी आप एक अच्छा स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो बहुत बार आपको रेट्रोफिटिंग का सामना करना पड़ता है। कोई पुराना स्ट्रक्चर बना हुआ होता है जिसको लोग चाहते हैं कि उसका पर्पस चेंज हो जाए, या बहुत बार इंडस्ट्रीज़ के अंदर मैंने ऐसा देखा है कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर आपको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना होता है, जहाँ पर आपको कोई नई मशीनरी प्लेस करनी है या कोई मॉडिफिकेशन करना है एग्जिस्टिंग प्लांट के अंदर। तो अगर आपने रेट्रोफिटिंग या स्ट्रेंथनिंग को भी समझना है तो उस पर भी आपको दिमाग लगाना चाहिए थोड़ा। ये 3 एस्पेक्ट ऐसे हैं, क्वालिटी एश्योरेंस, मेंटेनिंग, मॉनिटरिंग एंड रेट्रोफिटिंग, जो कि एक स्ट्रक्चर इंजीनियर को समझने चाहिए। नाउ विल कम टू एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि स्ट्रक्चरल सिस्टम्स होते क्या हैं। सो वी हैव द फ्रेम स्ट्रक्चरल सिस्टम, जहाँ पर आपको बीम कॉलम का एक फ्रेम होता है और उस फ्रेम से हम लोग बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्सेस एंड डिफ्लेक्शंस को जनरेट करते हैं उस फ्रेम के ऊपर लोडिंग डाल के, और फ्रेम स्ट्रक्चर के अंदर सारा फोर्स फाइनली फाउंडेशन के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। लोड बेयरिंग वॉल्स में आप लोग फ्रेम स्ट्रक्चर नहीं होता, वॉल के ऊपर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है फाउंडेशन के ऊपर। एंड वॉल लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर के अंदर एक लिमिटेशन ये आ जाती है कि मिड हाई राइज लेवल तक ही आप बना सकते हैं और स्मॉलर स्पैन्स बना सकते हैं। जैसे कि आप सोचें कि 10 मीटर या 12 मीटर तक अगर आपको कोई बीम रेस्ट कराना है या कोई स्लैब रेस्ट करानी है लोड बेयरिंग वॉल के ऊपर, तो जनरली हम लोग वो अवॉइड करते हैं और उस पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग फ्रेम स्ट्रक्चर को प्रेफर करते हैं जहाँ पर लार्ज स्पैन्स आ जाते हैं। लोड बेयरिंग वॉल, स्मॉलर स्पैन्स और मिड राइज बिल्डिंग्स में डेफिनेटली यू कैन गो फॉर कंस्ट्रक्शन। जैसे कि आप देखेंगे तो बिल्डिंग्स हो गई, स्कूल्स हो गए पुराने, और कुछ कमर्शियल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि लोड बेयरिंग वॉल पे बने हुए होते हैं। नाउ द ब्रेस्ड सिस्टम्स। ब्रेस्ड सिस्टम के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर फोर्सेस जो है वो ब्रेसिंग्स के थ्रू ट्रांसफर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जहाँ पर स्टील के अंदर या जहाँ पे हमें लिटरल फोर्सेस को प्रॉपर्ली ट्रांसफर करना है ग्राउंड के अंदर, वहाँ पर हम लोग ब्रेसिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। सो ब्रेसेस को वहाँ लोकेट किया जाता है जहाँ पर बिल्डिंग की कोर स्ट्रेंथ को हमें इंक्रीज करना है लिटरल डिफ्लेक्शन के लिए। अगर कोई चीज़ डिफ्लेक्ट कर रही है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, कॉलम्स डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अगर आप वहाँ पे ब्रेसिंग्स प्रोवाइड करेंगे प्रॉपर सिस्टम की, तो वो फोर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट होकर फोर्स ग्राउंड तक पहुँच जाएगी। एंड ये हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर भी यूज होता है और टॉवर्स के अंदर भी इस्तेमाल होता है। ब्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का, जिसको हमारे को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए जब भी हम बिल्डिंग बना रहे हैं। इवन इफ यू सी ब्रेसिंग का इफेक्ट सिर्फ स्टील मेंबर से नहीं होता। जब हम रेड ब्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए, तो वहां पर भी जहां पर भी ब्रिक्स हम एंड टू एंड ब्रिक्स पैनल से कंप्लीटली क्लोज कर रहे हैं किसी स्ट्रक्चर को, आरसीसी स्ट्रक्चर को, ब्रिक्स भी वहां पर ब्रेसिंग का काम देती हैं। और ब्रिक्स को भी आप एज अ ब्रेसिंग एलिमेंट यूज कर सकते हैं जब आप अपना डिजाइन कर रहे हैं सिस्मिक फोर्सेस के लिए। देन वी हैव द शियर वॉल सिस्टम। शियर वॉल्स के अंदर हम लोग आरसीसी या रीइंफोर्स्ड कंक्रीट की शियर वॉल्स बना देते हैं कंप्लीट।
जो कि बहुत अच्छा लेटरल फोर्स को रेजिस्ट करती हैं. इट इज नोन टू रेजिस्ट अ वेरी, सिंस इट हैज अ हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, और जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में सिस्मिक फोर्स एक्ट कर रही है, अगर आप वहाँ पर उसकी मेन स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो ज़्यादा लेटरल फोर्स को रेजिस्ट करेगी इन कंपैरिजन टू अ बीम कॉलम फ्रेम. हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, एंड इन सम केसेस हम शेयर वॉल्स इस्तेमाल करके, क्योंकि हम ब्रिक मैसनरी को कम कर रहे हैं तो हम लोग सिस्मिक फोर्सेस को शेयर वॉल्स बना के उसकी कॉस्ट भी कम कर सकते हैं. आप ब्रिक मैसनरी की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे और शेयर वॉल की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है. तो हम लोग ये कर सकते हैं डेफिनेटली कि हम लोग कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जहाँ पर कि हमारा मॉड्यूलर स्ट्रक्चर है या कोई लो कॉस्ट हाउसिंग है, वी कैन डेफिनेटली गो फॉर shear wall systems and direct flat slabs. But then again it has a limitation जहाँ पर spans आपके पास पास होने चाहिए और slab spans जो है वो 4 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. उस केस के अंदर हम लोगों को shear walls इकोनॉमिकल पड़ती हैं. अगर large span है और आप shear wall किसी उसके ऊपर लगा रहे हैं तो definitely cost increase हो जाती है. Then you have a truss system. Truss system के अंदर हम लोग lattice frame बना सकते हैं जो large spans के लिए बहुत बढ़िया है. अगर आप कहीं पे कोई चीज़ चाहते हैं जो कि लाइट वेट हो और लार्ज स्पैन प्रोवाइड करे आपको, दैट से अप टू 50 मीटर्स यू वांट, 60 मीटर्स तक का आप इजीली लार्ज स्पैन इसके अंदर इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इकोनॉमिकल रहता है. देन वी हैव शेल सिस्टम्स. शेल्स जनरली हमें बहुत ज़्यादा जगहों पर नहीं दिखाई देते, बट इट इज़ एन आर्टिस्टिक फॉर्म. आप शेल को डिज़ाइन कर सकते हैं किसी भी टाइप का लोड रेजिस्ट करने के लिए. शेल्स जो है वो एक तरीके के थिन कंक्रीट एलिमेंट्स होंगे जो कि एक डोम या किसी भी आर्च के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं. और लोड डिस्ट्रीब्यूशन शेल्स का फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस इस्तेमाल करके, एफईएम करके डेफिनेटली स्ट्रेस पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हो. बट देन शेल डिजाइनिंग इज अनदर फील्ड और एक सेपरेट टॉपिक बन जाता है डिजाइन के लिए. देन यू हैव केबल सिस्टम्स, जहाँ पर आप केबल स्ट्रेट ब्रिजेस हो गए या टेंशन के थ्रू हम लोग स्ट्रक्चर को टिकाते हैं. टेंशनड केबल्स का इस्तेमाल करके हम लोग स्ट्रक्चर को सस्पेंड कर सकते हैं उसके थ्रू. एंड कॉमन एग्जांपल्स आर केबल स्ट्रेट ब्रिजेस एंड लाइट वेट रूफ स्ट्रक्चर्स जो कि हम लोगों ने कार पार्किंग एरियाज में देखे होते हैं. देन यू हैव ग्रिड सिस्टम्स ऑल्सो, जहाँ पे हमें लार्ज स्पैन आरसीसी के अंदर बनाना है, वहाँ पर हम लोग ग्रिडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं. लास्ट इज द हाइब्रिड सिस्टम, जो कि आप बताएं तो एक स्टील और कंक्रीट के पैनल को इस्तेमाल करके हम लोग कर सकते हैं. जैसे कि आपने स्टील के डेक डाल दिया, उसके ऊपर आपने अपनी कॉरुगेटेड शीटिंग डाली और उसके ऊपर आपने कंक्रीट की स्लैब डाल दी. सो दैट कम्स अंडर हाइब्रिड सिस्टम्स. देन यू हैव योर पोस्ट टेंशन बीम्स सिस्टम ऑल्सो, पीटी बीम्स. वो भी एक हाइब्रिड मॉडल में वर्क करते हैं, जहाँ पर आप पोस्ट टेंशन केबल्स डाल देते हैं और पोस्ट टेंशन केबल्स को आप इस्तेमाल करते हैं फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट के साथ. Now, I would like to start the feature presentation for STAAD Pro. So before I start the feature presentation for the STAAD part, I would like to just go through the STAAD part quite quickly. And we have a STAAD model here, so I will just go through that how you can make the STAAD model. So I think before we go for the STAAD part, I think we should have a 5-minute panel discussion, and then we'll move on to the STAAD part. So I would like to note that Rahul Mathur sir is available for the meeting. Hello. Hello. Hello, sir. Hello. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Yeah. And Ketki ma'am Yeah. also. Hello. Hello, ma'am. So I have been, and Praful, are you there? Yes, I'm available, sir. Yes. So just wanted to thank you for attending this particular webinar. So we have started this particular series and we hope that we'll engage more people into it in future. तो मैं बहुत जल्दी राहुल माथुर सर से जस्ट एक व्यू लेना चाह रहा हूँ सर का, क्योंकि he has been into this field for a very long time. सर,
ऐसी और क्या चीजें हैं जो कि एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर को अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर नॉलेज, स्ट्रक्चर की नॉलेज के अलावा आपको क्या लगता है सर कि क्या ऐसी और चीजें हैं जो कि इंजीनियर के दिमाग में होनी चाहिए जब वो उस पर्टिकुलर फील्ड में ग्रो कर रहा है या काम कर रहा है? Yes. Just See, experience, sir. yeah, it's very good question. Very good question, in my opinion. Structural engineering or structural engineer, as you have rightly said in the beginning of your presentation, is a job of responsibility. बहुत जिम्मेदारी का काम है, और जो सिविल इंजीनियर एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर फंक्शन करना चाहता है, उसका सबसे पहला एटीट्यूड होना चाहिए लर्निंग एटीट्यूड. He should learn. He should learn. He should do regular studies. मैं और probably who better than your father A.K. शर्मा साहब, हम आज भी स्टडी करते हैं. आई स्टिल स्टडी माई बुक्स, है ना? तो Yes, sir. बुक्स की पढ़ाई बहुत बहुत जरूरी है. दूसरा, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं, उनको कोड्स और अपडेटेड कोड्स, जैसे आपका विंड कोड है, विंड लोड, यानी 875 जो है वो 2021 में रिवाइज हुआ है ना? तो Yes, आपके sir. पास लेटेस्ट रिविजन्स होने चाहिए कोड के. और अब तो BIS ने वो इजीली अवेलेबल कर दिया, यानी आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं ना. नो नीड टू बाय इट. नंबर थ्री, मटेरियल की नॉलेज. आपने बहुत अच्छा पॉइंट सिद्धार्थ उठाया था कि स्ट्रक्चरल मटेरियल्स क्या हैं और उनकी कोडल रिक्वायरमेंट्स. सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर आर द बेसिस ऑफ आवर डिजाइन. अब वो एक एक्सेप्टेबल पार्ट है, हमें सॉफ्टवेयर को यूज करना है क्योंकि हमें स्पीड में डिजाइन करना है ना? और क्लाइंट्स sir. ऑल्सो नीड स्पीड, है ना? हमारा क्लाइंट को भी स्पीड चाहिए, उसे जितना जल्दी हम डिजाइन दे सकते हैं. हमारा जो आर्किटेक्ट जिसके साथ हम कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, उनको भी डिजाइन टाइम पे चाहिए होते हैं या जल्दी चाहिए होते हैं, है ना? तो सॉफ्टवेयर आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग. बट हैविंग सेड सो, it also does not mean that we become totally dependent on structures. हमारी primary understanding of structure and structural behavior वो बहुत आवश्यक है ना? So मटेरियल की नॉलेज, मटेरियल के ऊपर जितने भी अप्लाइड कोड्स हैं, नॉट ओनली इंडियन कोड्स, जैसे जैसे आप राइज करोगे, और यू मस्ट हैव सीन द सेम वे, एंड आई एग्री, एंड आई एम श्योर कि जो बाकी दो पैनलिस्ट हैं, मिसेस मुंद्रा एंड प्रफुल्ल जी, वो भी एग्री करेंगे कि इवन जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे तो आपको इंटरनेशनल कोड्स और इंटरनेशनल ग्रेड मटेरियल्स की भी नॉलेज होनी चाहिए. फिर वो सब मटेरियल जो रिपेयर्स एंड रिहेबिलिटेशन में, रेट्रोफिटिंग में काम आते हैं. इट्स अ होल स्पेक्ट्रम ऑफ मटेरियल दैट यू हैव. ओके, सो इन सच अ केस, इन मटेरियल की नॉलेज बहुत जरूरी है. एंड मोर ओवर, आपकी प्रोजेक्ट स्टडी बहुत होनी चाहिए. आप जहां भी जाते हैं, प्लीज स्टडी दैट स्ट्रक्चर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द स्ट्रक्चरल डिजाइन सिस्टम. हम एक मॉल भी घूमने जाते हैं, सपोज हम सेलिब्रेशन मॉल भी गए, तो can't we see the structural arrangement? है? So be watchful, be open for learning. That is the biggest message I can give. I can speak so much, but let me stop myself here. Okay? नहीं, So थैंक यू सो this is मच. what is my आपको हम एक्चुअली वी नीड सर का जो एक्सपोजर है उसके लिए एक सेपरेट सेशन डेफिनेटली हम लोग प्लान करेंगे. बहुत इम्पोर्टेंट है my pleasure. इस चीज का. My pleasure. क्योंकि सर का जो एक्सपीरियंस है वो इस पर्टिकुलर छोटी से वेबिनार में नहीं हम समझ सकते. एक डेडिकेटेड वेबिनार. You have undertaken a wonderful बिल्कुल, job, I Siddharth. agree with you, Siddharth ji. Yes, it is just a starting. So I think जितने इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, बिकॉज द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हम लोग डिजाइन करना तो बहुत लोग सीख सकते हैं, पर एक इंडस्ट्री एक्सपोजर के लिए एक कम्युनिटी डेवलप करना जहाँ पर इंजीनियर्स की एक कम्युनिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इट इज जस्ट नॉट वन पर्टिकुलर एरिया फॉर सरपास. इट शुड बी अ ग्लोबल कम्युनिटी जहाँ पे हम लोग और भी लोगों को एंकरेज करें और उस चीज में ज्वाइन करवाएं. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू प्रफुल्ल. प्रफुल्ल, व्हाट डू यू थिंक स्टूडेंट्स जब कॉलेज में आते हैं, what is their mindset? क्या चीज वो सीखते हैं, क्या चीज वो नहीं उनको समझ में आती? Because you have been into the education segment for a very long time and you understand the student mentality also.
तो ऐसी क्या चीजें हैं जो स्टूडेंट्स जब कॉलेज में आते हैं इनिशियली उनको क्या चीज पे ध्यान देना चाहिए जो वो मिस कर जाते हैं, और 4 साल निकल जाते हैं उसके बाद उनको रियलाइज होता है कि अरे यार तो टाइम तो निकल गया है, अब मुझे जॉब करनी पड़ेगी और अब मुझे सीखना पड़ेगा। Absolutely, sir. Thank you so much, sir, first of all, for letting me for this opportunity to have this panel discussion with great fortuners, especially one of my mentor, Ketki ma'am. Well, absolutely, sir. This is one of the greatest hurdle which we observe whenever we talk about the academic field. The students, when they approach to a particular functionality, they are somehow lacking two major important things. Number one, they are not exposed to the sites, number one, and number two, they do not understand that what is the actual requirement of industries. So this is how the bridging is required between the industry academia, so that they can improve themselves, they can understand the better world, what is actually required right away in the world. And moreover, when I talk about the students, they are very much immersible to connect themselves with different important things like parameters of structures. Number two, they do not push themselves towards the the first prima facie, that what they are actually required to calculate the loads. So this is how this becomes an important task, that students should given an exposure to understand with different types of software knowledge as well as the industrial exposures, so that they can make themselves understand how the better world could be. So this is my opinion, and I hope that everyone would be satisfied with both the points. बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस यही Absolutely. है, क्योंकि बहुत बार मैंने ये देखा है कि लोग रियलाइज नहीं करते हैं। जी सर, राहुल सर कुछ बोल रहे हैं सर। यस 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 एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं ये कहता हूँ कि जैसे डॉक्टर को इंटर्नशिप कराई जाती है एमबीबीएस के बाद 1 साल, वैसे ही उसको डिग्री में एक इंटर्नशिप होनी चाहिए पूरे 1 साल की। बिल्कुल एंड सर, 100%। ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से ये एक अमेंडमेंट होना चाहिए। एंड प्रफुल्ल जी, यू आर इन एकेडमिक्स, प्रोबेबली द एकेडमिशियंस, एंड ऑफ कोर्स मैंने केतकी जी आल्सो इज एन एकेडमिशियन, तो ये इनिशिएटिव जरूर होना चाहिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है प्रफुल्ल के साथ, बिकॉज व्हेन वी डिड द सपा सेशंस बैक इन द कॉलेज, देन देयर आर फ्यू पीपल हु आर स्टिल वर्किंग विद मी। एक स्टूडेंट तो बहुत ही बढ़िया रहा मेरे साथ, जो कि उसने जब सरपास ज्वाइन करा इनिशियली उसका मेरे साथ ही काम करता रहा वो। तो श्रेयस को प्रफुल्ल ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था। एंड यस, सो व्हाट आई रियलाइज्ड कि जब मैं उससे फर्स्ट टाइम मिला था आज से 5 साल पहले, जब उसने सरपास सेशन अटेंड करा, उसके बाद अब नाउ व्हेन आई सी हिम आफ्टर डूइंग लॉट ऑफ वर्क, काफी मेहनत करी उसने, काफी घंटों काम करा है, नाउ ही हैज बिकम अ इंडिपेंडेंट हो गया है, काफी अच्छे से काम कर पा रहा है। तो मेरे को ये रियलाइज होता है कि हमारा एक बहुत बार ऐसा है कि हमारी कम्युनिटी में लोगों ने काम ज्यादा करना सिखाया नहीं है। हम लोग खुद ही स्ट्रक्चर इंजीनियर्स इतने फंसे रहते हैं कामों के अंदर कि हमारे को लगता है यार ये मेजर काम तो हम लोग खुद ही कर लेंगे, जो बाकी बचा हुआ काम है वो दूसरे से कराया जाए। और उसका एक रीजन भी है क्योंकि इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब, आप ये नहीं चाहते कि कोई उसमें अंदर मिस्टेक हो। तो स्ट्रक्चर इंजीनियर्स आर वेरी वेरी कैलकुलेटिव। मेरे आप फादर को भी देखेंगे तो बहुत कैलकुलेटिवली वो हर किसी को सब चीज़ें नहीं सिखाएंगे जब तक उनको ये एश्योरिटी नहीं हो जाएगी कि भाई ये आदमी ही इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट थिंग। सो बिल्कुल ठीक बात है कि एक माइंडसेट के लिए साइट विजिट एक्सपोजर और 1 साल की, जो सर ने बोला कि एक पर्टिकुलर इंटर्नशिप पीरियड बड़ा होना चाहिए, ये कॉलेजेस को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। बट आई थिंक इट विल टेक सम टाइम, बट देन वी आर हेडिंग टू द राइट डायरेक्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन टू केतकी मैम, ये है मेरा। केतकी मैम, आप सुन सकते हैं? Yes, yes, I can hear you. मैम, आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री एक्सपोजर जो स्टूडेंट्स को गेन करना है वो कितना इम्पोर्टेंट मतलब कितना इम्पोर्टेंट है वो एक्सपोजर? क्योंकि बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि आपने जब तक इंडस्ट्री में वर्क नहीं करा है तब तक आपके लिए जॉब्स की ओपनिंग होना या नए अपॉर्चुनिटीज खुलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक इट इज़ फॉर अ स्टूडेंट टू गेट दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री एक्सपोजर? Very important question you have raised, Siddharth sir. First of all, I am very, fortunate to share this platform with Siddharth sir, Rahul sir, and Praful. So thank you for inviting me in this panel discussion.
तो आपके क्वेश्चन के रिगार्डिंग, आई हैव बीन वर्किंग इन academics for pretty long time, and now I'm on the other side of the this thing. I'm working in field now. तो मैंने दोनों जगह जो एक्सपीरियंस किया है, तो डेफिनेटली जो आपने पहले बोला था कि एकेडमिक्स एंड इंडस्ट्री, इसके बीच में बहुत बड़ा गैप है, और वो ब्रिज जो वो गैप फिल करना है वो स्टूडेंट को खुद को करना पड़ता है, वो उसके लिए कोई और कर नहीं सकता है. सो दिव्या इज प्रेजेंट हियर. सिर्फ अगर मैं सही हूं तो चाइनीज बैम्बू का एक एग्जांपल है कि चाइनीज बैम्बू जब आप प्लांट करते हैं तो इट इज अंडरग्राउंड फॉर 5 years and you have to water it, you have to give the fertilizer to it, and after 5 years जब वो जमीन के ऊपर आता है तो वो इतना फास्ट ग्रो करता है कि इट ग्रोज अप टू 90 meters in next 5-7 years. तो इस तरीके से ये जो डोमेंट पीरियड है स्टूडेंट्स के लिए, दिस 4 years of engineering, they should use it to enhance their skills. अब ये एनहांसमेंट कैसे हो सकती है? सबसे पहले तो आपकी टेक्निकल बैकग्राउंड जो है, आपके टेक्निकल नॉलेज जो है, उसको स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि आपका काम ही पढ़ाई करना है तो आप पढ़ाई करके वो कर ही सकते हो. सेकेंडली, आपके साथ इतनी कंपटीशन है तो आप किस चीज को अपने आप को अदर कॉम्पिटिटर से बना सकते हो बेटर. तो दूसरा पॉइंट ये है कि आप सॉफ्टवेयर सीखो. आप अगर डिफरेंट अगर कोई भी डिजाइन सॉफ्टवेयर हो गए, ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर हो गए, ये सीख के अपने आप का सीवी जो है वो और स्ट्रॉन्ग बना सकते हो. और तीसरा पॉइंट जो है वो इंटर्नशिप, जो राहुल सर ने बोला, बिल्कुल डेफिनेटली इट शुड बी देयर कि एक साल की इंटर्नशिप बहुत जरूरी है कि फील्ड में क्या चल रहा है. क्योंकि कितनी बार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अपन एक आरसीसी में एक चीज ये करते हैं, डी रिक्वायर्ड, डेप्थ रिक्वायर्ड, और बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से अपन डी रिक्वायर्ड निकालते हैं. डी रिक्वायर्ड कुछ भी आता है उसको आप राउंड ऑफ करते हो, पर एक्चुअल में फील्ड में वो नहीं होता है. एक्चुअल में डी रिक्वायर्ड फील्ड में किस बेसिस पे होता है कि फॉर्मवर्क कौन सा अवेलेबल है, 9 इंच वाला है, 12 इंच वाला है, या 18 इंच वाला है. तो ये जो चीजें आप फील्ड में जो है वो आपको तभी पता पड़ेंगी जब आप फील्ड में काम करोगे. तो अगर आप पेड इंटर्नशिप कर सकते हो, पेड इंटर्नशिप करो. अगर नहीं कर सकते हो, 2 महीने का आपका समर ब्रेक है, आप 1 महीना जाओ, बिना पेमेंट भी आप साइट पे जाके रिक्वेस्ट देम कि मैं रोज आऊंगा, मैं रोज देखूंगा. इवन ऑब्जर्वेशन गिव्स यू लॉट ऑफ नॉलेज एंड विच विल हेल्प यू टू reinforce your theoretical part as well. आप जब प्रैक्टिकल पार्ट देखते हो तो थ्योरी में भी आप उतने ही अच्छे बनते जाते हो. That's what I feel. तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स को ये 4 साल में हार्डवर्क एंड सिंसियरिटी, ये दोनों की बहुत ज्यादा जरूरत है टू बी अ सक्सेसफुल इन देयर करियर. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. बहुत बिल्कुल सही बात बोली आपने. एक बात जो मुझे समझ में आई वो ये है कि आपको अपना खुद का ध्यान रखना ज़रूरी है. आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि मैं कोई चीज़ सीख नहीं पाया क्योंकि मेरे पास किसी रिसोर्स की कमी थी. रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बहुत जगह बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, पर होता क्या है कि हम खुद बहुत बार उन चीज़ों को अप्रोच ही नहीं करते या वो स्टेप ही नहीं लेते हैं. जो चीज़ मुझे समझ में आई, आपको आपकी खुद की जिम्मेदारी लेनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है मैम. बिल्कुल. थैंक यू सो मच. तो थैंक यू द पैनलिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें. नाउ क्विकली आई थिंक वी शुड मूव ऑन टू द STAAD Pro पार्ट, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. हम लोग आज STAAD Pro की बेसिक मॉडलिंग से लेके उसका किस तरीके से लोड्स हम उस पर डालते हैं और किस तरीके से उसके अंदर हमें एनालिसिस रिजल्ट्स आते हैं, इसका एक पूरा कंप्लीट इंटीग्रेशन देखेंगे इन अ वेरी स्मॉल फॉर अ वेरी स्मॉल प्रोजेक्ट. सो मैं कुछ बहुत ही छोटा सा एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा और जिसके अंदर मैं सारे वर्क फ्लो को STAAD में कवर करूंगा. सो वॉट एवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन दैट वी हैव सीन, मैं अपनी स्क्रीन वापस एक बार शेयर करता हूँ. So before starting my presentation, I would like to tell everyone about the upcoming webinar series in which we are having our experts again who are in the panel right now also. So we have Prachi Mehta, founder of ISID and Center Director at INFD Udaipur. She will be taking
on a webinar session on how to improve your communication skills and how to develop an outgoing attitude for building relationships. So it's just not one thing that आपने engineering कर लिया और आपने काम सीख लिया. It is very important कि आप अपनी skills को groom करें, अपने आप को groom करें, and एक management aspect भी समझें. So I think Prachi would be taking a very good session on that particular topic. Then we have Mr. Arun Kumar Sharma, who will be taking the next session on his industry experience on building different kind of RCC structures and what challenges that he has faced in his life, because he has worked for around 40 years in the industry. So he'll be sharing a lot of experience. Then we have Mr. Shantanu Sharma and Divya Sharma, who will be taking up a combined presentation on integrating architecture and structural design. Why it is very important for structural engineers and architects to in sync. बहुत बार ऐसा होता है कि आर्किटेक्ट्स जो काम कर रहे हैं वो अलग हो जाता है, उनकी पूरी टीम अलग होती है, और जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग टीम है वो बिल्कुल अलग होती है, और दोनों में इन सिंक नहीं होता, उसकी वजह से प्रोजेक्ट्स में डिले आती हैं. So they will be taking up this particular webinar. The schedule for these webinars will be shared on your email IDs when whoever has registered for the webinar previously. So now starting the presentation. For the STAAD Pro, it's a quite powerful tool for structural analysis and design, and it is offering advanced capabilities for modeling, analysis and visualizations also. आप अपने clients को 3D models भी भेज सकते हो बना के different types के. तो क्या क्या फीचर्स हैं STAAD के अंदर? STAAD के अंदर हम लोग मॉडलिंग कर सकते हैं. हम लोग के पास अलग अलग डिज़ाइन कोड्स है, जिन डिज़ाइन कोड्स को इस्तेमाल करके आप लोग उस पर्टिकुलर कोड के बेसिस पे अपना डिज़ाइन रिजल्ट्स निकाल सकते हो. So you can design your RCC structures, you can design your steel structures, and you can design even aluminum and timber structures. Then you have the load generation part and the post processing part, जिसके अंदर आप लोग अपने bending moment diagrams, shear forces, deflection के plots, और अगर आप response spectrum analysis कर रहे हैं तो mode shapes, इन सब चीज़ों को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से visualize कर सकते हैं और अपने client को present भी कर सकते हैं. So now, not going into the presentation part, I would quickly like to go directly to the model. जब भी हमको इंटरफेस खोलते हैं तो STAAD में हमारे को पहले एक नई फाइल बनानी होती है. So I'll just quickly go and do the filing work. We'll name our model as SAPAS Model 1, Model R1, and we'll generate a file. आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये बहुत फेमिलियर लगेगा. सो नाउ STAAD V8i यूज करते थे हम लोग पहले, पर अब STAAD का लेटेस्ट वर्जन जो है वो कनेक्ट एडिशन है, उसमें भी अपडेट्स नए नए आते रहते हैं उनके पास. सो यू कैन सी अ ब्लैंक कैनवास हियर. हाउ आई जनरली डू माई मॉडलिंग इज क्वाइट डिफरेंट. आई डोंट गो फॉर अ ग्रिड. आई जनरेट जनरली फ्रॉम द coordinate system. So you can see here we are quickly going to model a small structure which is 5 meters in height. You can go for 5 meters here. And then we'll give it 4 meters panel. So the first thing that you generate in STAAD is a nodal information. So first, that what we are feeding the software is how many joints are there. So all these nodes store the information, how the force will be transferred. Each and every node is important because the final distribution of forces takes place only through these nodes. अगर आपने नोड्स बनाने में गड़बड़ करी हुई है, या आपके नोड्स डुप्लीकेट हो रहे हैं, या नोडल इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली फीडेड नहीं है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आपका मॉडल में कहाँ पर गड़बड़ हो रही है आप उसको पकड़ भी नहीं पाएंगे कभी. So now you can see I'm just generating it in 3D. I have given a property in particular X direction. I have given the coordinates for the nodes in X direction. All these nodes are at a distance of 4 meters. You can go for one more grid.
Now you can see that we have a set of nodes in X direction. So what I will do quickly is that I will take these nodes and go to geometry part and make a beam in Y direction. So when I do this particular thing, you can see that I have made a row of columns in one particular X direction. Now what I plan to do is that I would use these particular columns and I would place them in the Z direction also. So here we go, we take the cursor and place these columns at a grid of 4 meters. Then we can again select these nodes and make another grid of 4 meters. Due to time constraint, I am not going to make a very complex geometry. I would rather go for a simple geometry for explanation of what is happening in the software. And this is what the basic webinar is all about. In future, we can definitely have discussions over more complex geometries. Plus, I have also shared a model here, which I will discuss at the end. Now we can do these are our columns grid, right? So someone is trying to admit it. So now you can see that this is our column grid. In the column grid, now I will quickly go to the add beam section and I will start making beams. You can do this particular operation through two different methods. You can select all the nodes also like this. And then you can go to the beam layout part and then connect these in the X direction. So there are two ways to do it. Either you can do it manually like this. One important thing that you need to remember is that always take the nodes from left to right and from backside to forward, like from X into forward direction. In the clockwise direction, if you follow, you will have a good geometry because it stores the information in that particular way. You go to geometry and then connect these beams. So you can see that we have generated a beam column frame. So our column height is around 5 meters. And one thing that I am right now not considering into account is the height of exact floor. So if you are modeling, if you're doing a center to center model, then 5 meters should be the center of your beam. That is important. And currently I'm considering 5 meters as center of my beam. It won't make much difference in the overall analysis part, but for the understanding purpose, you should know that you should always do a center to center modeling. So our column grid is at 4 meters. And column height is 5 meters. I will again quickly go and generate another floor here. So now I will just use another command, that is, we'll go to geometry and I will do a repetitive generate command, that is translational repeat. Since I know that all these floors, these are typical floors, I'm considering typical floors right now. So in Y direction, I will give it at least 3 more floors and a step height of 5 meters. So now you can see it will generate 5 meters floor for me. So quickly we have generated around, see, first, second, third, and the roof. So how quickly we were able to model G plus, you can say 1, 2, 3, G plus 3-story structure. Now, once you have done the basic modeling for the beams and column frames, so now you can see here that these are our beams.
and our columns are here in the Y direction. So we have made a beam column frame first. After making our beam column frame, we will do supports. So for supports, you can see that this is a soft story. You can say that this is a particular area where I'm not considering just kind of a stilt parking I'm considering. So my foundations would go down. So I will assign another parameter. Suppose my foundation is going up to 2 meters in Y direction. So now this is negative -2, which assigns the pedestal part. And then I will assign the plinth beam section. So quickly I select all the nodes and then I'm assigning. So here we can see that this particular I'm considering as a stilt 4. Still I've connected all the beams in the plinth beam area, because if we encounter any kind of seismic activity, plinth beams are very much important for transferring the base shear part. So now going directly, we will assign the last node points where we are supporting our foundation. We will assign that particular area with a fixed support. So you have to go for a support column. You have to create one support and then go to assign. So this is the best way to generate a model quickly and easily, where you can easily generate a model, and it won't take much time if you do this, follow this particular procedure. Now again, we will select our columns. We'll go to properties now. So once we have done the basic modeling, then we will go to a properties segment. We will isolate these areas so that the object is easily visible to us, and assign property to our columns. So I've selected all the columns you can see here. Now I will define rectangular property. I'm currently assigning it, so I'm going for a square shape column. You can do a rectangular column as per the architecture plan, but currently I'm considering a column size of around 450 cross 450, that is 18 inches cross 18 inches. So here you can see that the column property has been assigned. Now what will happen, that we are not reducing the column size. We can definitely reduce the column size after analysis based on the inputs of design that we are getting. But currently, in my experience, if we should avoid reducing the column size, it is always better to reduce the reinforcement in a building, because if the functional aspect is not being hampered by the column size, then it is always better to have a good section property and then reduce the RCC part, reduce the reinforcement part in the RCC structure. So quickly I'll go to the pedestal part and we'll do a 75 mm offset for. So the property that we have provided is 450. In the pedestal we will assign a property of 0.6 and 0.6 and we'll assign it. Now you can select this particular assigned properties and you can go to window and do a 3D rendering. So now you can see that the properties that we have assigned is clearly visible in the model. Quickly, we will do a whole view again. We'll view the whole structure. Now columns are assigned, but beams are still not assigned. So I will quickly go and select all the beams. And since for the ease of structure and for time limitation, we are doing a single kind of property, but as the building changes, there are a lot of different properties that you have to assemble, and each and every column can be different. Now we'll assign a property to the beam. So we are providing a column size of around 300, depth around 450. Is total depth of 18 inches.
and a column property of around 300, a width of 300. Now you can see how quickly we were able to do a complete model of a simple building. It is a 4x4 frame with a column height of 5 meters. Now you can see here that the member properties for the plinth beam is still not assigned. So in a bigger model, if you sometimes forget that where you have assigned a member property, if you have forgotten, you can go to select, you can go to attributes, and then you can select for missing property. So if you even select for missing property, the software will automatically identify which property is missing. Now, attributes, missing properties, and property. So I will assign my plinth beams a slightly dense property of 0.450 and 0.450. Now if you check, go to select, and if you see the attributes, you will see that there is no missing property. So no missing property has been found. Once your beam column frame structure is ready, you can go for modeling of the slab panels. It is very important to model the slab panels in a building, because if you don't model the slab panels, then the effect of slab is not incorporated in the model. Slab gives stiffness to the overall structure. It works as a force. It transfers the force over the whole structure. So you should always model plates whenever you're doing this kind of structure. So I'll just tell you how you can do a modeling. So you can go to parametric models and you can add panels here. So if you do a parametric modeling, then you will be having a mesh of structures. So if you see, we do a whole parametric model here and assign it as slab 1, do a slab and assign it a 1 meter density, optimize it, you go okay. So now you can see that we have assigned one slab, and this particular slab, you can see 1 meter mesh we have created. So this is the FEM mesh that will act as a slab for that particular beam frame structure. Now quickly we have to do it on all the floors. You cannot copy and paste these particular slabs because information is getting stored into the software. So you have to do it manually for each and every floor. So we have 4 slabs and we have done the parametric mesh for all the 4 slabs. In the similar way, if you want, you can also model a core like the one we have discussed right now. So now I will be modeling. So first what we need to do is that we need to mesh this thing. So now I will merge the mesh. As we merge the mesh, you can see that all these particular meshing has been assigned a node so that they can transfer forces throughout the structure. So now we'll add mesh to each and every slab. And then we'll see the whole structure. If you see it in 3D, you can now see that the slab has been modeled into the structure. Now this is the best way to do a slab modeling in the new STAAD Connect edition.
So I will encourage that you should always use STAAD Connect Edition, and V8i is now getting old, so a lot of new functionalities has been added to this particular software. Now you can see that we want to model a core lift, so a shear wall. So I will select these particular grids and I'll model a shear wall here. We'll go to parametric modeling. And we'll add a shear wall. So we'll go to add. And note that you have to take the shear wall till end where the foundation is resting. So this is my shear wall. Increase the meshing parameter here also. We'll add a 1 meter grid here and shear wall 1. And we'll add another shear wall here. Again, we'll go to preview model, add, and add a shear wall here. Density. Target element size gives us the size of the element, the plate element that we are making. And always note that you have to add the type of wall or type of beam that you're adding there. So shear wall 2. Again, we will add mesh to these things too. So wall 1 and wall 2. So now we have added our shear walls and we have modeled our slab also. Now you can see that we still have missing attributes here. So we'll go to missing properties and you can see that the slab and the shear wall that we have modeled has not been assigned any property. So I will go again, select this particular slab and shear wall and assign them separate properties. So I want my slab thickness to be around 6 inches. So I will select the slabs. And go to properties and assign them a thickness of 6 inches or say 150 mm. And again go to select attributes, missing properties. Now I have only missing property for the shear wall, so I will assign a thickness of shear wall around 9 inches, so say 230 mm. So see how quickly we were able to again model. So this kind of flexibility is being offered in STAAD. I have used other softwares also, but what I feel is that STAAD has given the most flexible ease of making the software, like these particular modeling. The ease of modeling and to model a lot of different structures is quite easy in it. So see how quickly we were able to model our shear walls. We were able to model our column frame structure here. And now once the model is complete, in the workflow, the next thing that you need to do is you have to go for the loading part. So first we made the model from scratch. Then we have assigned the properties. After assigning the properties, we assigned the supports. So we have assigned fixed supports to the column ends, which are the end of the pedestal where the foundation will start. And after that, we will come to the loading aspect. So you can see the loading tab here. So now we'll start assigning the type of loads. So first we will go and assign seismic forces, because this is the procedure of in the STAAD. First always add the seismic forces first. So I will assign EQ for earthquake force. I will assign as 1 and EQ minus X, EQ Z and EQ minus Z.
You can assign in seismic forces in vertical direction also, which should be checked for structures in high seismic zones, but currently I am not going into that thing, and I am just assigning in the lateral forces in X and Z direction. So this is, you can see, is my X direction and this is my Z direction. After making the load cases for the earthquake forces, I will make my load case for the dead load. And then I will make my live load. Then you can definitely assign the wind forces. I will not go into detail for the wind forces right now because it takes some time for the calculation of wind as per IS 875 part 3, but I'll just show you that how wind acts on it. So we'll assign a particular pressure to the, but that is not the correct way to do it. The code has prescribed a different way, but it will, since we have time constraints, so that is completely a different topic. It will take some time to assign all these parameters, but I'm just showing you the cases. So you can assign wind in X direction and wind in Z direction. So I'm just using two directions right now, but this is not exactly the correct way to assign it. Again, I'm telling you this thing because or in some structures I have seen a lot of engineers applying the wind directly on it, but that is not the correct way. You should follow the codal provisions. However, in the new STAAD, they have given a module for wind analysis generation, but I will still promote and say that you should know the code and know the background of wind calculation, how you are calculating the pressure and how you are applying it on the building. It is very important, just not to rely on the software. So quickly now we will go to the definition part and we will assign seismic definition to it. Now you can see here that there is a lot of different things that are happening in STAAD, which we have not covered in this particular seminar, but as a student or as a structural engineer, you should be well versed with all these options also. So you have vehicle definition here, where you can model the bridges and vehicle movement over the bridge. I have done that particular thing for some structures. And then you have time history analysis, where you can actually check the vibration of, you can actually model a vibration of a machine into STAAD using the time history analysis. Wind definition, here we are currently using, so I will just quickly go to wind definition and provide it a custom wind. So now you can see that in the new STAAD you have a provision of IS 875 part 3 2015. So you can directly add a customized wind from the code. If you open this particular thing, it will open a block where you can add the wind, but then again this is not the correct way to do it. So if you click here to generate, the codal provision for the wind calculation will open up here. You can add all these things into the command, but if I go into the details of this particular wind load generation, it is a separate topic and it will take a lot of time, so I'm not going into much details here, but you can definitely subscribe your maximum height, you can give your elevations, you can get the basic wind speed for the different cities, and then classify the class of structure, the terrain category, and then wind load will be generated from this particular software. So this is currently implemented only for the rectangular cladding part and not for the overall structure. Like, so if you have a circular building or different kind of shapes, then you have to do like for the hoarding part or for the trusses that we make, the portals or any large span sheds. I recommend that you don't use this directly because it will create a lot of issues. You have to calculate that thing manually. So currently we are putting an intensity of 2 kN per meter square at a height starting from 0. Now this is just for the understanding purpose only. And now we have 5 meters height, 1, 2, 3, 4. So we'll assign it at 20. So from 20 to 0 to 20 meters height, we are having an intensity of 2 meters acting constantly. In actual case, this will not happen. The force will vary from bottom and it will increase as the height of building increases. As a basic, that is the basic of structural engineering that we'll be covering in new sessions also. So currently I will just generate it and add it to the add intensity to the definitions, and then we will add the seismic definition also. So quickly now we are adding seismic definition as per IS
2015, and accidental loads we are not including right now. So in 2015, you have to enter all these values manually. But if you click here and go to the option for IS 1893 Part 3 2016, you will get an option to generate. So you can go to generate. You can select the zone you want or the city you want. So select, I'm going to select zone 3. You can select the type of structure that you are making. So we are making a simple building which is with an ordinary moment resisting frame. So I'll go for RC building with ordinary moment resisting frame, and response reduction factor value is assigned as 3 automatically. Importance factor that you have to assign has to depend on what kind of building you are making. I would prefer that we should keep it at least 1.2 and not go below that. So if you are making small structures, then you can go for an importance factor of 1, but I would prefer that for residential and commercial buildings, you should always go for 1.2 parameter. Again, type of soils, I'll go for a medium selection, and percentage damping. Percentage damping has been set to 5% for RCC structures and 2% you have to consider for steel structures. Now, if you're doing a steel structure, you have to remember that you have to change the value here for 2. Foundation depth you can assign, we have assigned at 2 meter, and time period calculation is very important. Time period calculation can be done through the empirical formula prescribed by the code. Currently, I'm not adding the exact time period for this building, but we can calculate it by multiplying this particular width and 0.09 of square root of the height. So that can be done right now, but it will take some time. So I'm just skipping that part. I'm assigning the periods here. You can calculate the exact period from the empirical formula given in the code. For RCC buildings, it is different, and for the steel building, it is different. And we will generate it. So whatever forces we have generated are assigned here. We will assign the height of building as 20 because above ground floor, the height of building is 20 meters. And our base dimensions, you can see that we have assigned 4, 4, 4. So it is 8 and 12 meters in one direction and 12 meters in another direction. So once we have added all these parameters, we will add this definition. Here is another important thing that you can add now in the new STAAD is that you can add the effect of walls that I was talking about. Walls act as a bracing for the structure, but for particularly this model, I'm not going into that much detail. For that, you have to attend our second or third webinar because it is a series of webinars we are going to do on STAAD. So a lot of stuff is there that cannot be completed in 1 hour. So I would definitely recommend you that whoever has attended this webinar should attend the next 2 webinars also so that we can cover the whole thing. So quickly now we will go and assign the dead loads. For assigning the dead load, we'll select the floors first. If you're having difficulty in assigning the floors, so you can directly go to select. You can go to beams, parallel to X and parallel to Z. And quickly define them as a group. So I'm defining the group of floor. Now you see by mistake I have assigned ground floor as floor also. So that was not required because here we are not having a floor. So we have to remove that thing from the group. So you can highlight it here. Select. Remove the above floor and do another associate. So now you have all the groups again ready, and then we will add dead loads. So I'm adding a floor load considering the dead load as my slab thickness is 150 mm. So I will assign it a floor load plus additional 1.25 kN load off for the floor and finishes margin. So you can calculate it here like simple calculation. So 150 mm into 25 the density of concrete will give you 3.75 kN per meter square value plus floors and finishes you have
1.25 kN extra. So you have 5 kN as your dead load here. So minus 5 you're adding, add. So you can see how quickly floor load has been generated. Now the problem is there that once we have generated the floor load, there is an issue of, that the floor load is visible and it is taking a lot of time to regenerate. So I would recommend that you go to labels, go to labels and display floor loading and floor load distribution. You can set off and apply. So the floor load is still acting, but it's not visible. Or you can do one thing if you want, you can add display floor load distribution at least. Okay, apply. So it will just show you the floor load distribution, but not the exact floor loading. But still it will impact the working for you. So I would recommend that once you have applied the loaded, you can just switch off the distribution also. Our floor load is assigned. Now I'm just assigning a wall load to the outer periphery of the building. So I will consider a 9 inches wall. So 0.230 is 9 inches wall multiplied by a height of, we have a 5 meter height here. So 5 meters and reducing the thickness of 450 mm is of a beam depth. So 5 minus 4.5 minus 0.45. You will get 4.55. So 4.55 is exact your brickwork height, and we'll multiply it by 0.230 wall into a density of 22. So you'll get 23 kN per meter square per meter load. So now we are adding the load member minus 23 kN per meter square per meter. This is the UDL that you have to add on the periphery of the walls. So now you can see here that we have a stilt below. So I'm quickly adding the wall loads here. So you can see that the wall load has been assigned. Now there's one problem, that the wall load that we have assigned has gone onto roof also, because here there will be a parapet wall and there won't be a full wall. So I can again need to deselect the loading. So for doing the deselection part, you have to go to the load and toggle load. If you do the toggling part, you can manually remove the loads here. See. And we'll quickly go and assign a parapet load of minus 5. So now you will say how I calculated minus 5. So I would say that if my height is 1.5 meters parapet, 5-foot parapet wall into 0.230, that is 9 inches. So we will get, into multiplied by density. 1.5 is the height, 0.230 is the wall thickness, into 22. So you'll get around 7.59. So I will increase it to 7.5. So now I've assigned a maximum height of
as a parapet load. Since we have selected the toggle mode, so it is quite easy. If you have assigned a wrong property or wrong load to some location, you can change it anytime. Now there are some important loads that you need to consider. That is the additional brick koba or brick kharanja load that you should always add on the roof. Currently, I'm not adding that particular load, but I would recommend that you should add that flow into the roof slab also. I think something is still wrong. So we have done with the dead loads, and now we are shifting to our live loads. So for this particular building, I would recommend that we do a minimum commercial loading of around 3 to 4 kN. Now again, you can check that thing in IS 1875 for the loading parts. You can definitely go for the part 1 and part 2 and part 3. Or IS 875 is a very important code. So for the imposed loads, for the live load conditions, there is a particular table that is given there, which tells you what kind of load has to be taken into account for different type of structures. So for commercial loading, I'm currently considering, on safer side, I'm considering 4 kN per meter square, since the function is not defined currently. We don't know what kind of activity will happen on the floor right now. So I'm assigning 4 kN, that is 400 kg per meter square load for the live load. So live load is assigned since I have switched off the label for the live load parameter, so it is not currently visible here. If I switch on the display floor loading, you can now see that the flow loads that I've assigned is visible here. Now, important thing is there, when we do an analysis for the slab, STAAD does not have currently the capacity to do a check for alternate panels. That particular facility has been provided in another software by Bentley Systems, that is RAM Structural Systems. So as a general practice, generally we are adding a full floor load, which is currently on the safer side. And this is a standard practice, but I would encourage that if you have, when we get that kind of flexibility where we can check the alternate panels for the live load cases, we should definitely check the alternate panels also. Like skip one particular panel and then assign load to the second case. So this kind of activity can be done on STAAD. We do it for some projects where it is very critical and we have large spans. But for this particular building and the time constraint, I'm just assigning the floor load to the whole building. Now you can see we'll assign it a wind load. So our wind load will be acting from almost 5 to 15 meters. So I'll go to wind X direction, get wind load from 5 to 15 meters and add. Five to 20 meters, sorry. I have to add 5 to 20 meters. So I have a wind load acting in this particular direction. This is not the correct way to add the wind load. Still, just for representation purpose, we are adding it so that we have a complete analysis. And again, 5 to 20 meters in Z direction. Now we have to define our seismic cases for the seismic definition part. So now we'll quickly go
into the seismic definition and first assign the self weight. Then we will again go to the seismic definition and assign our floor weights. Since we have a group named floor, we'll assign a full dead load of 5 kN without assigning it a sign, because when you are doing a seismic analysis, you don't have to assign sign to the force. It will be automatically transferred into X and Z direction. Elements and members currently weight will be taken in the self weight part, and last we have to add the member weights. So for adding the member weights, what we can do is directly go into the command file. Go to the dead load case, select the dead load on the walls. So this is the member load that we are having. Assign it here. We will remove the sign from the command file because we don't want it to be acting in the Y direction. We have to ask software to add it into the X and Z direction automatically. Now close the command file. So now you can see that we have assigned the seismic definition, and the loads that we have assigned are added here. So this is the dead load that we have assigned. Now we have to assign 50% of the live load also. So I will go to floor weight, and 50% of 4 kN we have assigned as the live load. So I will assign a 2 kN live load as our reduced floor weight for the live load consideration, because code says you have to consider 50% of the live load only. After you have done your definition, you have to go to the load cases that you have made in the load case section, and then assign it seismic definition into X direction, add into minus X direction, seismic into -1, then go for EQZ, again seismic, Z add, seismic Z -1. When you have added all these parameters, again you have to go to the command file, and then quickly assign perform analysis, check, change. This will load the values. Now this particular analysis that we are doing is a static equilibrium analysis. It is applicable for buildings up to a height of 15 meters up to 20 meters, so it's not an issue. If there is a high seismic zone where the you have areas like high seismic zone up to 4, even in seismic zone areas where there are frequent earthquakes coming, we would request you to go for a response spectrum analysis. That is another different topic that we will be covering in the upcoming seminars. So now we have added perform analysis check command in all the earthquake cases. Now software will take some time to regenerate. So now our earthquake case is also defined. Now I will again quickly go into forming the load combinations. So for load combination generation, since we have already assigned all these things, so since we have assigned here the properties already, so this particular case has been assigned into seismic.
Dead loads have been assigned as dead load type. Live loads have been assigned into the live load category. Wind load has been assigned into wind load category. So you can do a shortcut here. You can directly go to automatic load generator. You can go to automatic load combination. Select IS 456 for the concrete structures, table number 18, and you can create load combinations here. So I will go for generate load. All my load combinations are automatically generated and I can add them for the analysis part. So now you can see how quickly we were able to generate all our load combinations without any hassle. You can do this thing manually also. I would recommend that you should always check all these load combinations manually, but for taking up the speed, because speed is very important when you're designing structures, and this is what we are actually teaching students in Surpass. We want students to know the software, like learn the software background and do fast working. So this is our motto. Now our load combinations are assigned, so we can definitely now go for the analysis part. In this particular case, I will just go for load data. I won't go for a static load or static case. All these cases that we are going to discuss in the future webinars, what is the requirement of static checks, what is the requirement of static loads, where do we require the mode shapes, and what kind of combinations we can do. So now you can see here that there is another option of P delta analysis. P delta analysis is required to be done for buildings where the small delta effect is very important. You can see here it is written small delta effect. So small delta and P delta analysis is done when there is a deflection in the building. It actually acts as that particular deflection creates forces, additional moments and additional forces on the structure, lateral forces on the structure. That has to be incorporated into our design. The software has the capability to address that particular effect of deflection, and that is done through the P delta analysis. So if you do a P delta analysis case and run a small delta analysis, you will get the effect of that deflection, additional forces generated through the deflection. This is required to be done for a multi-story building. For this particular model up to G+4 or G+3 structure, I don't think it is a very big requirement, but when you are designing a G+20 structure or you're designing a G+15 storage, even G+10, you should definitely go for a P delta analysis. So currently we are just going to form a normal load data and add it to the requirement. So now it is added as perform analysis, and we are now going to run the analysis part. Software has given us one error. Let's check it quickly. Parametric modeling, you have to go for the parametric model. Now we'll again run the analysis.
Sometimes when you do a modeling, it takes some time for some rectifications. It is possible that you will get some errors initially because some commands get misplaced when you do some working on the STAAD editor. So whenever you do some changes in the editor, it's always important that you recheck it one or twice. Since time is limited, I have not done the thorough checking on it, but I am trying to modify it as soon as I'm able to understand what the error is coming. Let's see, hopefully I think the problem is resolved now. I'll again go to the analysis part. Since we have added some parameters like the meshing, it takes some time for the software to analyze, but you can see there we have 0 errors and 1 warning. So I think this is a successful analysis that we have completed in a very short time actually, because if you see the pace with that we have built the whole structure, I would recommend that you should take not to go so fast and design the structure properly. Because we had limited time, I had to do some rush and skip some points, but still I wanted you to understand that what basics are going behind doing the modeling and the loading part. So I think now we can go to the post processing. And for each and every load case, we will be able to see what bending moment and deflection and shear force values are being generated. So I have selected one particular floor. And now we'll go to results. And here we can see the bending moment that is acting on one particular floor due to the earthquake forces in Z direction and in the X direction. The bending moment due to dead load, the bending moments due to live load. If you are not able to see the bending moment, it does not mean that is not there. It is sometimes important that you change the label setting, go to scales and apply your change the scale for the bending moment so you can see it clearly. So now you can see that as soon as I'm changing the scale, now the bending moment values are easily visible. Now we can see that the whole moment diagram and the moment distribution has been completed by the software. And we can go to the results case, go to combinations, and we can check for each and every case. We can check the bending moment and load case values. You can do this manually also for one particular frame and check your calculations to be matching with the calculations that are coming in the software. Now we'll take one particular frame. And check the bending moment post processing. Now you can see that this particular case is with a load combination of earthquake. If you see a load combination of simple dead load and live load, you will be able to see different type of bending moment diagrams here for the whole building, since it's a frame structure. And again, we can check shear force values also along with bending moment, and definitely displacement and deflection can also be calculated.
if you see the plates, you will be able to see the stress distribution on plates also due to the forces. So if you go to plates and you apply the maximum local or global moments, you can go for checking the global moments. So now you can see here that we get the global moment values also. So this is just a brief introduction into STAAD and how it takes care of the analysis part, the modeling part, and the loading part. In the second round of webinar, we will be introducing how you can do the foundation design and how you can design each and every element using STAAD RCDC. These two softwares are different and they are being integrated into STAAD as one particular software. So you can see here that after post-processing, you have options to design in STAAD Foundation Advanced. You have option to design concrete elements like beams and columns and foundations in RCDC, that is known as STAAD Advanced Concrete Design. And if you want to design a flat slab, you have an option of designing Advanced Slab Designer. All these things are provided in a package called Structural Worksuite. So you can definitely explore what Bentley's Structural Worksuite is. And I think because of time constraint, I would restrict my session up to here only, and I would quickly show you a complete building which we have done in steel. You can design buildings in RCC also, but the procedure for designing a steel building is totally different. And we will be launching a special course on designing steel structures using plate girders for using STAAD Pro. So now you can see here the hospital building that we have done for Tata Nestin. It's a big model, but you can see it's not a very simple geometry. Lot of columns. Total built up area is around 90,000 square feet. And this whole building we have designed for them and got it Cat 1 approved from their engineers also. So this was modeled and designed by me. I think during the lockdown period, I was sitting on this particular project. Took a lot of time, a lot of effort, but then this particular project you can see here is being done completely into steel. The modeling part remains the same, but the assignment of the member properties changes. The loading part would also remain the same. But you can see here that the loads that we have added, we have done it manually and not directly the way I've told you in the previous model. This particular model was done differently. So yes, I think you can design concrete structures and steel structures in STAAD. So due to time consideration, I think I wanted to cover a lot of more things into this particular webinar, but due to time limit, I think we have already been here for around 2 hours, more than 2 hours actually. So thank you so much everyone for joining. Now the floor is open to any questions anyone is having related to the presentation. Thank you, sir, for the nice presentation. Thank you so much. Thank you. We will be doing more such sessions. So whoever is interested, I think there is one question. Yes, Ravinder. हेलो, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है। मेरा कहना था कि एक्चुअली हम लोगों ने अभी स्टैड पे बहुत ज्यादा काम नहीं कर रखा है जी। तो आज का सेशन तो बहुत ही अच्छा रहा, मजा भी आया। तो मेरा ये कहना था कि थोड़ा सा हम लोगों को इंट्रोडक्शन के हिसाब से स्क्रीन का इंट्रोडक्शन और चाहिए था, भले आप अभी के वेबिनार में दे या नेक्स्ट टाइम कभी देना। बेसिक अपना जो टूल्स होता है ना, तो उसकी बेसिक डेफिनेशन हमें चाहिए थी। एक्चुअली डायरेक्ट आपने क्या कि डेली प्रैक्टिस के हिसाब से समझा दिया तो जी। नहीं, देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सेमिनार के थ्रू कि ये जो सेमिनार हमने कंडक्ट करा है ये फ्री वेबिनार है, पर हम लोग हमारे डिटेल्ड कोर्सेज भी लॉन्च करेंगे स्टैड के अंदर। जी। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको 2-3 प्लेटफॉर्म्स के थ्रू प्रोवाइड करी जाएंगी। सरपास हम लोगों ने स्टार्ट करा था 2012 में। बहुत सारे इटरेशंस करने के बाद हमें ये समझ में आया है कि बहुत सारे डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग हैं जिनको अलग अलग तरीके से सॉफ्टवेयर सीखना होता है। मैं आपको अभी इन्फॉर्म कर देता हूं कि अगर आप हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। देयर विल बी अ डिटेल्ड कोर्स ऑन STAAD Pro दैट विल बी अवेलेबल ऑन पेड बेसिस, जहां पे आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेंगे हमारे बनाए हुए
प्लस 1-to-1 इंटरेक्शन मिलेगा। फ्री जी वेबिनार के अंदर हमारे पास 1-1.5 घंटे से ज्यादा नहीं होता, और क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि 1-1.5 घंटे के बाद आदमी का कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है। तो जी डिटेल्ड वीडियोस आप अपने लेवल पे कभी भी देख सकते हैं। उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा कि क्या चीजें आपको करनी है। जी हाँ, बस मैं वही रिक्वायर्ड था, तो उसका जो भी आप लिंक हो या जो भी आपका प्रोसेस आप मुझे बताना। तो आप हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं तो आपको डेफिनेटली सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी हमारे साथ। और आप फ्री वेबिनार्स के लिए भी रजिस्टर करें। आज इंट्रोडक्शन हुआ है, और भी जो भी इंफॉर्मेशन आएंगी, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हम लोग सिखाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग दिस। इंट्रोडक्शन है दिव्या मैडम वगैरह से, तो अपना एक्चुअली अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं हुआ इसके सर। जी 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 ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। ओके सो